Namaskar, welcome to the international seminar organized by University Department of Home Science, Lalit Narayan, Mithila University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार, विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शीघ्र ही कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। Namaskar, welcome to the international seminar organized by University Department of Home Science, Lalit Narayan, Mithila University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार, विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शीघ्र ही कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। किसी तरह के ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने हेतु संपर्क करें makemymuhurt.com। यह पुनर्तः मिथिला विश्वविद्यालय के शोधार्थी द्वारा बनाया गया इवेंट्स प्लानर टीम है। Good morning. Good morning, everyone. Welcome to all the in the Medicinal Properties in the seminar, which is organized by both departments. You all are welcome again. On the behalf of Nutrition Department, you all are welcome. On the behalf of Hygiene, you all are welcome. The Medicinal Properties. I'm Nutri, Assistant Professor Department of Nutrition. Our seminar, International Seminar, is organized on the topic Insurance Health and Nutritional Security for Community Research at Tertiary Standard. We have 6 communities on this platform. We all are welcome to all the members on this platform. I welcome on the behalf of the So, the 6 members are our 6, 2 are USA, and 2 are US speaker, and 2 are Finnish. All are international videos, but so welcome all. Thank you. Now I like to invite my international speaker, Dr. Sharma. Now I'd like to invite Dr. Sharma for the presentation. Now, before starting the presentation, I would like to give brief of Dr. Sharma. She is regarded certification presentation from years ago. She is very young, very beautiful, very humble, very polite. She has lots of medical science, and she did lots of work in medical section. She is affiliated with medical hospitals as physicians, staff, and human hospital as a dietitian, as well as Secretary Hospital as a senior physician. She has practiced medicine for over 15 years. She is a member of the Medical Society of the Indian and Dietitian. So, I would like to welcome Dr. Sharma. Please, welcome Sharma. Please welcome the voice on this video. Please ma'am, start the presentation. Auntie, now you can start. Good morning to all our participants. Good morning to all the participants, the staff members of Mithila University and our students.
I feel humbled and very privileged to be invited by you all as a guest speaker. The topic that is assigned to me is to talk about the nutrition of children during the COVID era. Before I get started, I just wanted to share some of the pertinent events that happened in the 2020. The year 2020 will always be remembered as the most widespread and deadly pandemic in recent memory. COVID-19, which first appeared in December 2019, reshaped society and changed to the world as we know it. The world, can you hear me? Yes, Auntie, I can hear you. But can she hear me? Okay, so I will go ahead. Pragati, can you confirm at your end? You all can hear, Auntie? Yeah, Anyone from audience, can they confirm? Yes. Okay, thank you. Yes, Auntie. Please go ahead. Okay, so the World Health Organization declared COVID-19 to be a full-scale pandemic in March of 2020. Soon afterwards, all the school, business, and restaurants and everything closed. Between its discovery in December of 2020, even till now, we have been unable to control the whole pandemic. There has been millions of affected individuals all over the world, and in the United States, and later on during my slide presentation, I will go through the statistics. Right now, I just wanted to share with you, in spite of all the vaccines that have been developed, still we are unable to control this strong virus and more. Our children, I get started with our children. Our children get very much affected. Our children get affected because of their proper nutrition. The proper nutrition of our children of all ages during COVID and post-COVID plays a significant role towards a normal growth and development. It affects their physical and mental health. Children are not the face of pandemic. However, they risk being the biggest victim because their lives are affected due to the collateral socio-economic impact of the family. Specifically, families all over the world have lost their income, and this is plunging to a global economy. So, considering the facts of this, what I have said, I have prepared some slides also, and I like our students and I like our viewers. I just wanted to let them know that the impact of social distancing on the children is very, very important. The children's health are affected, starting from either undernourished to overnourished, getting obesity and getting succumbed to the underlying diseases like diabetes, high blood pressure, and more. The Academy of Pediatrics, in collaboration with the FDA and World Health Organization, have proposed several guidelines to take care of this, the malnourishment among the children, which has been affected. So the proper nutrition is not there because of the limited food supply, as we all know. Because of the disease stage, the farmers are unable to produce the products. So all these things has made the things worse.
So what I'm going to do is just to make our viewers oriented with what the World Health Organization, in collaboration with the Labor Department, the federal government, what they have done to help with the nutrition of these children during the COVID pandemic. The first slide, please, is a childhood nutrition during... 1 minute, Auntie. Let me share my screen for your slides. While we are getting the slides ready, I'd just like to talk to you a little thing about the nutrition. A good nutrition of the children with or without the COVID era pandemic depends upon during the first 2 years of life for the healthy growth and development of the child. The WHO and UNICEF recommends early initiation of breastfeeding to the children within 1 hour of birth, exclusive breastfeeding for the first 6 months, and then introduction of nutrition, etiquette, and safe solid food at 6 months of age till 2 years. Breast milk is known as the critical source of energy and nutrient for babies, as well provides antibodies to fight against the infection. During the preschool years and during the school years, the parents can teach kids about nutrition and making healthy choices. This will set them up for the next step to the kindergarten, and when they go to the first grade or second grade. Family meals eaten at regular interval also encourages a table manners and improve the conversation skill. And this is all in the slides. Auntie, I'm sharing my screen now. Please confirm at your end. Yes. The first slide is the childhood nutrition during COVID-19. So what is the food security? According to this is the second slide, please. Click the second slide. What is the food security? According to World Health Organization, the availability of the food, production, distribution and exchange, food utilization and food access. So these are all parts of the World Health Organization. The food insecurity rates are highest. Third slide is the food insecurity in United States, and this is highest among the single mother and the families who live beyond the poverty. The rate of food insecurity is higher than the national average for Black and the Hispanic. This is more common in both urban and both rural areas and also more common in the third world countries. The fourth slide shows the global food security index according to the World Health Organization.
The Global Food Security Index accounts for the issue of food affordability, availability, the quality, safety, and natural resources. This data is available in 113 countries throughout the world and measures 59 indicators measuring the hallmark of food insecurity for the global undernourishment of the children. COVID-19 has quickly nulled the finding of 2019 index but has been factored into the resilience component of food supply. There is a graph here about the Global Food Security Index, and the part of that is in the green indicates these are the countries they are getting adequate food supply, and the yellow and the faint ones said that still they are not getting the food supply adequate. So nutrition in the United States and the food and nutrition, it plays a crucial role in the health promotion and chronic diseases. There are underlying causes like in children, underlying causes like before I mentioned obesity, malnutrition, diabetes, and all these underlying factors are very consequently related to the nutritional deficiency. So what are the strategies for promoting a better nutrition? The strategies for promoting a better nutrition includes both federal and the state government participate in the food assistance program. Food stamp SNAP. This is the largest program that provides meal vouchers to the underprivileged areas, and those food stamps can be used in the grocery stores. And so far it has been working here, and this is a global World Health Organization with the United Nations. They are all collaborating the fact that these things will be in all over the third world countries. So here is a diagram. Do these policies work? It's just a graphic illustration of all the policies that Labor Organization, WHO are doing. The blue area indicates the areas that are fully covered, and the gray areas where we still need deficiency of the food. The next slide now, the childhood nutrition during COVID-19 pandemic. A proper nutrition for the children of all age is very important, and limited access to the healthy food, like I said before, precipitates the children to get disease. And this is a chart, and this chart is on the myplate.com. Excuse me, the slide showing हो रहा है. Yeah, this chart. This is the slide 13. And the chart describes, it's a circle with the fruits, vegetables, grains, proteins, and the dairy products. Now, this is just somebody has talked about this long time, and it is a poem, and that is from the Doug Davis Food Service Director for Burlington School District. He says, we have worked too hard for the waste too many years to allow the quality of school meals to slide as a result of pandemic. Eating healthy food is only one piece of this puzzle. Helping kids develop a love relationship with food, learn its history, understand how the food is grown are the best reward for our work. And these lessons will contribute to the future generation of
the healthy eating. The last, the slide 60, the slide 60 says keep calm and manage stress. For the sake of our students, I'm talking Hindi also. Are you able to understand what I'm? क्या तुम लोग सब समझ रहे हो? Yes, ma'am. Okay. But just the last slide, I have under books, how to keep your child safe and healthy and a guide to navigating childhood development. Both of my books are electronic and it has described the full detail about the nutrition value of each and every food. And the myplate.com, I have followed all the guidelines according to the Academia Pediatrics, the World Health Organization, and CDC, and all the informations are provided in my two books. If there is any question or anything that comes from our viewers, please let me know, and I will be also very happy to send you guys the bibliography. I don't have time to detail about the whole details about the food, but like everybody knows, our daily chart should consist of fruits, vegetables, grains, and proteins, and the dairy products. So by following the proper nutrition, that helps. It's a perfect guidelines for our children to develop normally. With their brain development is good and they have developed good cognitive function. It's very important for the parents and the caretakers to know the fact, to emphasize about the routine daily of the food, and also the recommended nutrition and eating habits for the children of all ages. All it includes careful, properly meals, home and school, working with a dietitian to space meals, and set a good example by following the nutritional guide, like choose myplate.com. So the proper selection of meals includes fruits, vegetables, grains. Establishing a healthy habit at a young age is very essential for development and prevention of various health-related conditions in the children, like I have mentioned before. I'd like to thank all our viewers for watching me and listening to my talk about the food nutrition, and for further details, I refer you to please look through my two published books. And the picture is right there, how to keep your child safe and healthy, and a guide to navigating childhood development and the well-being. I'd like to thank our staff I'd like to thank your staff for giving me an opportunity to speak with you. Thank you again. Any questions, I'm very willing to answer, if time permits. 1 minute से मैम मैं बोलना चाहती हूँ. हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग. हाँ, गुड मॉर्निंग. मैं बोलना चाहती हूँ कुछ अपने शोध के विषय में मैम. महिला श्रमिक सुरक्षा तथा इससे जुड़े I lost you. पता नहीं तुम्हारा कनेक्शन. I think she got disconnected. Yeah, connection खत्म हो गया. तुम बोलो, I'm sitting here. I'll be very happy to answer any questions asked by you. Any questions? ऐसे मैं बता दूं कि
actual question answer section जो है it's very connected after the both session will be covered. Okay, that's why हम बिना इंटरव्यू किए I will move to the next speaker. Okay. I have to on helping me with this coordinating meeting. मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। मैम वॉइस क्लियर नहीं है। आ रही है वॉइस बट कम आ रही है मैम, क्लियर नहीं आ रही है। Very well, very well, very well presented, but the stomach, the full of life, made what you live on the say thank you for accepting our invitation. My sincere and special thanks to you. Great thanks, many thanks, so thanks. Now, so it's time to invite my next speaker, Mrs. Pigmentation. She is a motivated health and nutrition counselor, senior software engineer for 30 years, president of Bihar, and she's with business and lifestyle advisor in the overall in practicing areas. She's full of life, she's very dynamic, she's very relaxed, she's very good. She's very powerful and she's very honest writing for her meetings and references. So, it's about Muslims body, the Asian body on the spectrum, the shoes of the class, the class, so, please, everybody, now, continue your presentation. Hello everyone, can you hear me? Yes. So first of all, thank you so much Pragati for warm welcome and good morning to all of you, members of organizing committee, Home Science Department of Mithila University, all students and teachers, and first of all, please accept my thanks for giving me opportunity to come here and talk to all of you. So I'm trying to share my screen. Let me know when you see my screen. So let me know when you see my screen, my slides. Can you see my screen? Yes, ma'am. Yeah, you can see my slide, physical and mental well-being during the pandemic. Yes, ma'am. Thank you. So I'm going to cover this point, this topic today, during pandemic, how we can fit ourselves physically and mentally. So as Pragati introduced me, my name is Ranjan Modi and this is my small introduction. I did my bachelor's from Agriculture University, you all know, from Samastipur, USA, and I did my master's from Govind Vallabh Pant University of Agriculture and Technology. It is in Panagar, Uttaranchal. I'm Sun and Oracle certified programmer, currently working as a senior software engineer at IPG MRM. And I'm motivated nutritionist and I try to help my friends, family, whoever needs some help during their nutrition and lifestyle. And currently I'm president of a non-profit organization MI Bihar. We live in Michigan, me and Nero Auntie, we live in Michigan. And we made our one organization here, so where people all from Bihar we meet and we try to teach our kids what is the Indian culture and how we live in Bihar, what we do.
So this is the MI Bihar is that if you, whenever you get chance, you can try to go on this website. So now coming to my actual topic. So physical well-being. What is physical well-being? So to keep the body in good health is not like luxury. It is our duty. We have to keep our body in good shape and good health. To keep the body in a good health is a duty. Otherwise, we shall not be able to keep the mind strong and clear. This is said by Buddha. So what is physical well-being? So physical well-being is not just the absence of illness, infection or diseases. Physical well-being includes lifestyle choices to ensure overall health and a balanced state of mind, body and spirit. Physical well-being involves making good choices when it comes to what you eat, how much you exercise, how you manage stress, how much you sleep, and your hygiene. So steps to take to achieve physical well-being. First comes balanced diet. What to eat and what not to eat. So eating a rainbow. When we have food plate in front of us, we should always make sure it should be colorful, like a rainbow. So we should have all color of food in our plate. So when it comes to nutrition, variety is a key. Eating different colors ensures we are getting enough micro and macronutrients. Eating a rainbow has also been proven to protect against illness, bone density loss, digestive problems, and with weight management. Like we eat red food, tomatoes. So it's not like red food is tomatoes, strawberries. So, but we should be trying to eat local grown food. Whatever is locally grown in our area, that makes our body, that increases the immune system. Like for red tomatoes, I lived in Bihar long time. I brought up there, so we don't need to worry there. Oh, I need to get red food, so I need to get strawberries. No, tomatoes are easily available. So eat those things, whatever is available locally and local grown food and easily available. So red pigmentation can be attributed to many nutrient, one of which being lycopene, a powerful antioxidant that has many health benefits such as sun protection, improved heart health, and low risk of certain types of cancers. All health benefits listed boost immune system. So if we eat good, we are increasing our immune system. Orange pigment, carotenoid, it comes in carrots, gajar. It's found in carrots, fights off cell damage and protect our eyes against light waves. Can be captured into vitamin A and protects from all kinds of diseases and illness. Yellow food, mango, very easily available in Bihar. So it has full of vitamin C. It is needed for our growth, development and repair of body tissues. It involved in immune system and wound healing, maintenance of cartilage, bones and teeth. Green, we all know, since like I think we are 4 or 5 years old and we start talking, we need to eat. Every parent says to their kids, okay, you need to eat green, you need to eat green. So green, very important. Spinach, it contains beta carotene. It helps reduce oxidative stress on eyes and converts into the vitamin A. Hydration, most important. It helps us to lose our weight, speed up metabolism, increase blood volume, so it's easier for heart to pump the blood and oxygen, keeps our skin supple, cleans body, keeps kidneys in good shape, and help us to protect us from all kind of infections. Now it is micronutrients. So what is micronutrients? And this is very important during the COVID-19. You may have heard or read so many articles about to protect us from COVID-19, we should eat zinc-rich food, or we should get somehow sun or some
supplements, we should get the vitamin D and vitamin C, of course, like all the citric fruits, increases our immune system. So micronutrients, vitamins and minerals, it is necessary for our all body functions. Vitamin C increases blood antioxidant level by 30%, which help us fight inflammation, prevent chronic diseases, relaxes blood vessels that carry blood through, lowering blood pressure, produces white blood cells and help us to function those things. Vitamin D. It's very important and it is available very easily, especially where you live. Where I live in Michigan, getting sunlight is luxury for us. We get hardly like 3 to 4 months sunlight. We can go outside and we can sit in the sun. But in Bihar, it is very easily available. So whenever you get chance, you should try to wake up early and sit in the sun for some time so you can have enough vitamin D. It enhances the immunity by regulating the body's antimicrobial responses and activates the body's inflammatory response to infection. It reduces risk of autoimmune disease. It known to repair our damaged immune cells. Now vitamin E. It's found in immune cells and regulate of natural. It regulates the natural. It is kind of natural killer of the unhygienic things, and it prevents the viral infection. Deficiency of vitamin E is known to impair immune responses to infection. It weakens our muscles and increase risk of chronic disease. Iron stimulates production of white blood cells that combat pathogens and prevent infections, inhibits growth of bacteria, induces cell cycle arrest and kills the cancerous cells. Folate. It facilitates the cell growth and development, increases production of antibodies and that identify disease-curing pathogens, metabolism, DNA, and DNA synthesis. Selenium. This is also very important during the COVID time. It reduces the inflammation and prevents cellular damage. It is powerful antiviral effects against the respiratory infections. It inhibits spread of cancerous cells also. Zinc. It is antiviral, anti-inflammatory properties that reduces risk of respiratory tract infections, improves natural killer cells activity. Beta carotene. It is a plant compound that is converted into vitamin A and it enhances the immunity. So steps to take to achieve physical well-being by exercising. So what is the benefit of exercise? It strengthens our heart, it improves our circulation, it lowers blood pressures and lowers triglyceride levels, effect on subcellular level. Those are the benefits of exercise, and we should try to do sometime, like if we want to keep us healthy, we should do high intensity interval training. So what is high intensity interval training? It is particularly beneficial for overall health and boosting immunity. Short bursts of intense exercise with period of rest or low intensity exercises, we should always start this with 30 minutes and not every day when we are starting. Once we are used to do this, we can start doing this every day just the 30 minutes. But gradually you can increase this time. So during pandemic, we can eat good, we can eat healthy food, but there is a stress also. We are, especially now, I guess we all are a little bit used to, but when this started, we all were very stressed. What will happen, how we can protect ourselves, how we can protect our family and friends. So moderate amount of stress, it is fine. We all are having stress every day.
But if it is chronic, it affects our body. So, what happens in stress? So, fight or flight. So, we have in our brain central nervous system, it controls the responses. It tells us we need to fight it or we need to flight. So, hypothalamus tells adrenal gland to release stress hormone. These hormones rev up heartbeat and sends blood to needed areas. When a stressor is going, all should stop. With with excess stress response don't stop very dangerously. It is very dangerous for body, brain and survival mode. Yeah, let me grab the water. Just give me a minute. Let me grab the water. उसका खत्म हुआ था. हेलो, गुड मॉर्निंग. फोटो का बताओ. Sorry about that. So how we can manage our stress? We can manage our stress by exercising, by deep breathing, pranayam, and eat. We can eat well. If we eat good food, we feel good and then we feel less stressed. We can eliminate triggers, whatever, like if we know this thing is triggering our stress, so we can try to avoid that. And meditation. I'm sorry. Okay. No, it's fine. So, relax sometime. पहले मिलावट होते हैं तो कहीं मिलावट है, कहीं तारीफों की चीजें बन रही हैं. मिलावट करने होते हैं तो कहीं मिलावट है, कहीं तारीफों की चीजें इधर नहीं आते. बुनियाद के पत्थर बुनियाद के पत्थर नजर नहीं आते. इतना अच्छे है और कितना क्या सकते हो कि आपका जो प्रोस्पेक्ट्स है आप देख रहे हो जो अभी आपने देखा तो वो प्रॉब्लम है उन्होंने केसेस से उन्हें बच्चे भी कई केसेस और वो केसेस है और लॉस फैमिली जो है वो दर्शक है तो शी इज फ्रॉम इंडिया. But from 20 years, and then after that she will then she will continue mathematics and she is practicing as a technician in Europe. प्रोग्राम में आप जो करते हैं डिसिप्लिन छोड़ना या बड़ा नहीं होगा, कोई भी डिसिप्लिन बड़ा नहीं होगा. हर एक डिसिप्लिन का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है. सब डिसिप्लिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरमीडिएट है. उसी तरह से जैसे एक आदमी एक सोसाइटी में अकेले नहीं रह सकता, एक डिसिप्लिन सब एक दूसरे रिलेटेड और सब एक दूसरे का आप जो करते हो कोई भी डिसिप्लिन इंडिविजुअली पढ़ रहे हो वो नहीं हो पाएगा. इसलिए आपने और क्या आगे भी आप बच्चों से जरूर करते हैं ये कभी होम साइंस को आप दूसरे और so sleep helps us. It is a boost. It boosts our immune system. And for kids, it controls the growth and stress hormones. If kids sleep properly, it regulates their growth and stress hormones.
It regulates our appetite, breathing, blood pressure. Like if we don't sleep, we feel we feel tired, and we like if we take the more deep breathing, and the blood pressure, our blood pressure goes up, and the cardiovascular health. So how much we should sleep? So sleep is like for adults 7 to 8 hours, for teens 9 hours, for kids 10 hours, and good light sleep consists of 4-5 sleep cycles. So we need to identify our sleep cycle, and accordingly we should sleep. Now is hygiene. It is very important, not just during pandemic and this situation. It is always. So how we can maintain the hygiene? Wash hands. We should wear masks. We should make the social distance. Shower, washing clothes. Don't touch our faces. Cover. We should cover our. When we are coughing and sneezing, we should stay home if we feel sick, and keep surface clean, specifically if there is a high traffic areas. Now comes the mental well-being. What is mental well-being? As per the WHO, mental well-being is not just lack of mental disorder. It is to realize our potential. If we are not realizing our potential fully, that is also mental disorder. If we are not able to cope up with our stress, whatever stress we are getting in the day-to-day life, if we are not able to cope up with that, that is also not mental well-being. So we need to learn how we can cope up with the stress. Work productivity. If some work we are getting and that has to be done in 1 hour, and for that 1 hour, that work we are taking 4 hours, so that is also like we are not mentally healthy. So we should do something to make ourselves mentally healthy. Make contributions. How this helps? Like if we are contributing, so what happens when we donate something? We feel okay, I donated this thing, so whoever is the taker, they are getting benefited, but that's not right. When we give something, we donate something, we feel happy from inside, and we feel more confident. So we are helping ourselves if we donate something to outside or anyone. So donation is not just by the money. It can be by helping someone, helping to the elder people, helping to the kids, helping to the unprivileged kids by money, or by donating books, or giving some kind of like tutoring. So any kind of donation and contribution, we can do it for the society. So how to deal with the anxiety and depression? Food. Food can help us to dealing with the anxiety and depression. You can see when we eat sweet, we feel happy. So that helps us to deal with the anxiety and depression. When we see good food in front of us, that makes us happy. So food, and we all have heard this. Gut is the second brain. So when we eat good, we feel good. So food can help us to feel good. It helps us to reduce the anxiety and depression. And sometime like when this pandemic thing started, we were all the time in front of TV and listening the news, watching the news. That makes us nervous. That makes us anxious. So if we feel, okay, this news is making me anxious, we should stop watching news. We could just watch whatever is the needed, just to know what is going on in the country and world. That's it. And take care to ourselves. We should take care to ourselves. How we can take care to ourselves? By eating good, by eating healthy food, by doing exercise, by getting ready. We should be presentable. When we are presentable, when we are ready, when we are dressed up nicely, we feel good. So that makes us happy. Sunlight. Sunlight helps us a lot.
Like we feel here, like when we are sunny outside. In when I was in Bihar, I never felt sun this much importance when I started living in the Michigan, because sun is luxury here. So when I see sun outside, I feel it is good. It's good. Like we feel like bright and sunny day. But when there is a cloudy, you can see if cloudy is continuously 3, 4 days or 5 days or a week, then we feel like gloomy. We don't feel happy from inside. So sunlight is very important. Worry drop. How can you do worry drop? Like sometime if you are sitting at home or you are alone and you feel nothing is going on good with me, start writing all your worries. Okay, this is not right, this is not right, this is not right. Once you think you're done with the this is not right thing, then start writing what is right. And then go, okay, this thing is good in my life, this thing is good in my life, this thing is good in life, and you will feel good after that. So try to always do worry drop. Of course, mindfulness, meditation help us a lot, and breathing exercises. थैंक यू। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए प्लीज। अपने शोध के विषय में महिला श्रमिक सुरक्षा तथा इससे जुड़े अधिनियमों का महामारी नियंत्रक प्रभाव रिंकू कुमारी। मैं हूँ शोध छात्रा गृह विज्ञान की BNM। सर Thank you. Can you hear me, Pravati? Thank you. Please, very well presented, very thought-provoking topic, very sincere and special thanks to you for your unconditional support. Really, you are great. So many thanks, many thanks. Now you're excellent, you're super bright, and you are with you. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Well done. Our team based on the department of science, on the department of science, on the department of bachelor. The point below, there are all the devices of the science. On the Nutritional seminar, organized by Food Science Department on steering health and nutritional security. The should have a very during that. I'm Welding, Assistant Professor, Home Science Department, both of you again. Here are 6 Indian speakers of the platform. Out of 6, 2 from USA, 2 are Indian speakers, and 2 are from India. Then I would like to give brief about the Dr. Mithila brought the regard the nutrition compensation in the food hospital USA. Dietitian motivation health nutrition counselor and software engineer from USA. My previous speaker, Professor Millet, from BRA another keynote speaker, Mithila, Chief Scientist, Department of Home Science, BRA. My
National Speaker, Professor Singh, Chief Scientist, RSK Musa Samastipur, and another speaker, dietitian, Anila Sambo, Nutrition Program Manager, working with JD. Okay. All those are completed. International speakers are completed their presentation. So, in our session, this is going to continue. So speak. Some kind of I just want to initiate my program or my introduction seminar through Sophie. Because Sophie is district auditor, MC district. कमल पे दिया
साले दूसरे तिवरी कमल के विराजे हाथों में दीनो साले हमसे हमारे सबको बुझाओ बस हमारी देहु मन से हमारे मिला के अधूरे हमको बुझाओ बस हमारी देहु ये शहरी देहु अज्ञानिता से हमें तारी देहु ये शहरी देहु अज्ञानिता से हमें तारी देहु ये शहरी देहु अज्ञानिता से हमें तारी देहु. Thank you. May I request? Actually, the better the better speech gives the whole stage. जो ऑनलाइन माननीय उद्योगपति महोदय रजिस्ट्रार साहब, हमारे मुख्य वक्ता जो इंटरनेशनल हैंडलिंग प्रोफेसर नीलू प्रसाद, इंजीन सिन्हा, स्पीकर प्रोफेसर नीलू सिन्हा, प्रोफेसर रेखा सिंह और Professor Usha Singh and Manila Samuel. मैं सभी का बहुत ही तहे दिल से तो धन्यवाद देती हूँ कि इस कोविड में जो कि बहुत व्यस्त प्रोटीन आती हैं तो बहुत ही व्यस्त रहते हैं और इन्होंने हमारे विभाग के लिए अपना बहुमूल्य समय हमें दिया. भविष्य विद्यालय में प्रशासन विशेषकर उन सचिव चौधरी सिन्हा को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे विभाग में जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है बहुत ही उत्साह के साथ हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें हमेशा मार्गदर्शित करते जाती है कि हम कैसे आगे बढ़ें. तो इनके मार्गदर्शन में हमारे विभाग में दूसरा सेमिनार है जो विश्वविद्यालय प्रशासन के सहयोग से हम इसे पूरा कर रहे हैं. आज का विषय जो हम ये दूसरी बार इसकी महामारी इसको झेल रहे हैं. एक समय ऐसा आया हमें लगा कि ये हमें लगा कि ये समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर से इसकी मान को हम लोग झेल रहे हैं. हम सभी जानते हैं अब किसी भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो हमको दवा के साथ अपने दूसरों का भी ध्यान रखने के लिए बोला जाता है. अतः कोविड में एक दवा और दूसरा पोषण भी बहुत ही अपना अदा करता है. इसी को ध्यान में रखते हुए ये सेमिनार का आयोजन किया गया है. अब इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगी कि सभी अपने जो भी हमारे इस हमारे में आए तो उनको मैं धन्यवाद. Hello, good morning. Now I like to proceed for lighting the lamp. So since the request for equipment or academic is conversation for lighting the lamp. Come from Mario.
इस साइड को छोड़ दीजिए, इस साइड को छोड़ दीजिए। Let's take our cheapest. May I request to Shama, please participate picking up with the children of flowers. May I request to Abhayana to participate that's Mithila, ma'am. Actually, Bihar University. Actually, Bihar University. May I request to Chandana, please, participate. Superfood. Madam sir. May I request to Chandana, please participate. Thank you. Now I request you. I will do for now. Please come up. Please. Please come on the stage. And
all of you and namaskar. We have with us the Honorable Vice Chancellor of Mithila University, Darbhanga, Professor Surendra Pratap Singh, who have joined us for online work. The Registrar of the University, Professor Darbhanga, who has also joined for online work. And here we have in the presence the head of the Department of Home Science, Mithila University, Dr. Hamsaba, faculty members and organizing secretary, Dr. Pragati, Dr. Radhika Kumari, faculty members from other colleges of Mithila University, Professor Usha Dharma, Head Home Science, Bihar University, and a distinguished personality, the Dean of Humanities, Professor Pigmentation, research scholars, and my dear students. This is indeed a very special occasion for the university. So on behalf of the university, as well as on my personal note, I welcome you all once again in this very special occasion of international seminar on ensuring health and nutritional security through Nutri-sensitive agriculture using pandemic. The topic of the seminar is very carefully chosen and it is very relevant in today's context. Therefore, I once again, on behalf of myself and also on behalf of the university, congratulate the Home Science Department of Mithila University for organizing this one-day international seminar. We have with us distinguished delegates and persons who have joined us through online mode. Professor Singh, former head of Home Science, Bihar University, Professor Rekha Sinha, Chief Scientist, Department of Home Science, BAU, Professor Neeru Prasad, retired pediatric physician, Henry Ford Hospital, USA, Professor Usha Sen, Chief Scientist, RPCLU, Usha, Samastipur, Mrs. Wendy Modi, Motivated Health and Nutrition Counselor, also a senior software engineer from USA, Mrs. Anita Muritu Samuel, Dietitian and Nutrition Program Manager, working with Jivika. They have all joined us through online work. So on behalf of the university and on my personal note, I once again welcome you all, the distinguished and learned resource persons and delegates. I also welcome all the participants of this one-day international seminar. The topic, as you all know, is very relevant and useful. And my dear students, I would like to speak in English first because this is an international seminar and many of our participants and delegates are not very conversant with Hindi. So whatever I will talk, it may be translated to you in English later on. So first, I will address keep my language in English. So be patient, my dear students. As we all know that nutrition is a very rational topic. It is globally well recognized a rational phenomena, both as a critical development imperative as well as crucial for fulfillment of human rights, especially for the most vulnerable, the children, girls, and women.
it constitutes the foundation for human development by reducing the susceptibility to infections, related morbidity, disability, and mortality burden, enhancing cumulative lifelong learning capacity and adult productivity. So we all know that if a person is taking nutrition sufficient food, then he can be well out from infectious diseases, also related morbidity and disability, and the rate of mortality will also reduce in such a society. Also, the cumulative lifelong learning capacity of children will increase, and that will also increase the adult productivity. The purpose of human life is to learn and also give something. So what we learn as a young, we can give proportionately when we become adult. So malnutrition or lack of nutrition will affect both. A child cannot learn up to his or her ability, and therefore he will not be able to transfer or able to contribute as much as he or she should for the development of the society. Nutrition is considered as one of the most fundamental requirements for human development, poverty reduction, and economic development with high economic returns. Undernutrition is both a consequence as well as a cause of perpetuating poverty, eroding human capital through irreversible effects on cognitive and physical development. So lack of nutrition can create irreversible effects which cannot be reversed or we cannot take it back. The cognitive, mental as well as physical development hampers because of lack of nutrition. The incubational cycle of undernutrition manifests as low birth weight and brain capacity in a child is compounded by gender discrimination and social exclusion. Nutrition is central to achieving the United Nations Sustainable Development Goal, which in short we call SDG. It is crucial to prevent undernutrition as early as possible across the life cycle to avoid irreversible cumulative growth and development deficiencies that comprise maternal and child health and survival. It helps in improving optimal learning outcomes in elementary education, improving adult productivity, and undermining gender equality. High level of maternal and child nutrition still persists in almost all developing countries in Africa, Asia, and Latin America, including India. In spite of strong constitutional directions, legislative policies, plans, and program committees, there are a number of programs mandating food and nutrition entitlements for children, pregnant women, and breastfeeding mothers with maternity support and infant milk substitutes, infant food substitute for protecting and supporting and also promoting nutrition interventions. India, as you all know, is home to the largest number of children in the world. The women and children constitute about 70% of the total population. And this 70% of total population, when it's calculated in terms of number, you can think of 140 crore, 70% of 140 crore, 140 crore population is a huge number. And it is found that
Every third child and woman in India is undernourished with low BMI. BMI is body mass index, and anemia, even hunger, micronutrient deficiencies such as vitamin, mineral deficiencies, all these things. So, the burden of malnutrition is good. Global report on nutrition also underlines obesity and overweight as malnutrition. Not only underweight or underdevelopment is the effect of malnutrition, that means not having proper nutrients in your food content, but also these days it is observed that obesity and overweight is also a problem which may be arising from overnutrition. So there is not an equal distribution of nutrients among all the children and women in the world. Overweight children are also at greater risk for non-communicable diseases such as diabetes, cardiovascular heart diseases, and it is found that such overweight children are mostly found in urban areas. Determinants of undernutrition is the outcome of the complex interaction between insufficient dietary nutrient absorption and inadequate prevention of disease and infection. Victims are mostly from the low-income group, or you can say that the poverty generates a vicious cycle of malnutrition. Those belonging to the low-income group have low intake of food and nutrition. They also suffer repeated attacks of related disease and infections. Though of their children are affected, they have small body size, and also not only in the childhood but also as adults, they are not having the proper physical and mental growth as they should have. This impairs the productivity and also lowers the earning capacity, which again is the cause for poverty. So the poverty is a cyclic process. It starts with poverty and again ends with poverty unless we look into how it can be prevented. So basically, the properties of that malnutrition, and whatever is the topic, what is the topic of today's seminar, is integrated chapter. So we have to think about nutrition again and again. Now, unless malnutrition is removed from the society at large, we cannot think of a developed nation and developed human race. So I was second time that US department for taking up this topic. Sometimes the food quantity cannot be taken even. What are the foods where we can bring nutrients? But there is a capacity. There is a capacity beyond which a human being cannot eat. So if we say that there are certain things, like we know that animal meat where we can find protein, or there are some agriculture items where also there is large amount of protein factor. There are micronutrients also there, but we cannot eat beyond a certain capacity. So how to improve the nutrient sensitivity of agriculture produce is very well, I can say that it's a very well researched topic which the department has chosen for today's international seminar. Now, how we can overcome it? So we have limited resources, that is the land, labor and water. These are the things we require for agricultural practices.
But through the intervention of science and technology, we can improve the nutrient factor of various produce, and this can be done using biological, chemical, mechanical, and crop choice practices. So I think this one-day seminar will help learners, resource persons with us, and throughout the day there will be discussions, and you will definitely come out with strong recommendations, and particularly the recommendations for the local need, the national need, and finally the global need will be submitted to the university, which the university can propose to the state government and the union, MHRD, and UGC for implementation. So I once again congratulate you all for choosing this extremely beneficial topic. Thank you. Thank you. Very important. Very presented, well experienced, really well. Thank you. It was really dynamic, very intellectual, very intellectual. I hope you are very hardworking, you are very honest, human as well. Great. Thank you. Thanks a lot. May I request you, Fatima, and show you at the department and please now, please go on the stage. Please welcome now with a huge round of applause. Lalit Narayan Mithila विश्वविद्यालय से मेरी आई हुई प्रोफेसर डॉली सिन्हा जी उनका उद्घाटन की और इस सेमिनार के करने के लिए विद्या रानी हंसदा ने मुझे आमंत्रित की जो आने के लिए बैच था और मैं प्रगति को धन्यवाद करती हूँ मुझे अनाउंस करके बुलाई है और मैं इस इंटरनेशनल सेमिनार के लिए हमारे प्रोफेसर मैडम ने पूरा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को पूरा चमका दी और पूरे रिहर्सल मचा दी। बच्चे लोग आगे बहुत सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और ये इंटरनेशनल और नेशनल सेमिनार के लिए हमेशा हम लोग जुटे रहेंगे और हम लोग के साथ अनेक विश्वविद्यालय से, अनेक संस्था से, अनेक और पूरा यूनिवर्सिटी के हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जुटे हुए हैं। वो लोग सब एक जगह एकत्रित होकर हम लोग सेमिनार को अपना बढ़ावे और नेशनल सेमिनार करने के लिए हम विद्या रानी हंसदा को मैं DR2 भी है, मेरी ऑफिसर भी है और वो धन्यवाद देती हूँ और सब लोग जुट के और बहुत ही अच्छा ये सेमिनार हो रहा है और आप लोग हमेशा इसमें जुटे रहिए और आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद। Only 1 or 2 minutes, so I want to be brief about the theme of the program. As you all know, topic of seminar is ensuring health and nutrition security through nutrition security economy. We know food is our basic need food as like fuel. So quality selection of food items affects our mental and physical health. Each and every person wants to smart and healthy and then diet plays a big and important role for achieving this and also food. But malnutrition is supplies millions of people suffering from malnutrition. In fact, 1.9 billion adults are overweight or obese, while 16.2 million are underweight. Among children, 52 million under 5 are suffering with wasting. So, at the time, nutrition-centered agriculture is a food-based approach to agricultural development that puts nutritionally rich food, dietary diversity, and food fortification at the heart of overcoming malnutrition and micronutrient deficiency. This is a need to transform food system and improve the nutrition of billions of people.
Objective of this seminar to achieve nutritional and health security through agriculture and other food system, strengthen linkages between farm diversification to diversification, and bridges the nutrition gap through agriculture for processing, value addition, and biomodification. Thank you. Now, we are at the end of the conversation. So, may I request to apply the now? No, answer is not online. That's right. Requesting. Okay. Actually, मैम को जल्दी है. मैम को चलिए क्वेश्चन निकाला है इसके जो आप वैसे चलता है एक्चुअली गोविंद सर लोगों को बोला हाँ बहुत अच्छा बोलते हैं on the platform of this information seminar organized by the Nutrition Department, so the topic is sharing how the nutrition security through nutrition and education panel. Please, sir. May I request you? Are you here, sir? Sir, please tell me, sir. Are you aware, sir? Unmute your microphone. Unmute. You please unmute your please, sir. Yes. मेरी आवाज जा रही है? हाँ सर. Please. प्रगति मैम, मेरी आवाज जा रही है? Yes. सर्वप्रथम मेरी आवाज जा रही है ना? मेरी आवाज जा रही है आपके पास? You are completely over. Please, sir. We are hearing you. So please go in. Yes. आज जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार गृह विज्ञान के द्वारा आयोजित की जा रही है, उसके लिए सर्वप्रथम गृह विज्ञान के विभागाध्यक्ष, संगठन सचिव प्रगति मैम और पराजिता मैम एवं अन्य शिक्षकों को कोटि कोटि धन्यवाद। परम आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एसपी सिंह साहब, मंच पर विराजमान समाज भौतिकी विज्ञानी माननीय डॉक्टर डॉली सिन्हा साहिबा एवं उपस्थित ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग हैं, उन सबों को दिन के रूप में मैं स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि सामाजिक विज्ञान के अधीन गृह विज्ञान के द्वारा बहुत ही ऐसे मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार किए जा रहे हैं जो समसामयिक है एवं वैश्विक है। मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता स्वास्थ्य है और वहीं से उसका जीवन शुरू होता है।
स्वास्थ्य होगा तभी शिक्षा, आर्थिकी, राजनीति, सामाजिक क्रियाकलाप प्रारंभ होंगे। आमतौर पर लोगों की ऐसी धारणा है कि रोग का न होना स्वास्थ्य है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पष्ट शब्दों में बतलाया है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर स्वस्थ होना स्वास्थ्य की परिभाषा मानी गई है। केवल रोग का होना, नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। इस संदर्भ में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। हम शरीर के तौर पर स्वस्थ होंगे, मन के स्तर पर स्वस्थ होंगे और समाज के स्तर पर स्वस्थ होंगे, तभी हम स्वस्थ समाज, राष्ट्र और विश्व की कल्पना कर सकते हैं। अभी एक नई अवधारणा स्वास्थ्य में जुड़ गई है, जिसे हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संबंध समाज से विशेष रूप से बन गया है और इसीलिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात की जा रही है। यदि हम इस स्तर पर, इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में इन चीजों पर चिंतन, मनन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ करें, तभी हम इस सेमिनार की, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि गृह विज्ञान विभाग स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न आयामों पर 2 दिवसीय कार्यक्रम में अपने विचार को रखेंगे और जो विचार छनकर आएगा समाज के पटल पर, वह प्रस्तुत किया जाएगा। मेरी ओर से 2 दिवसीय संगोष्ठी को शुभकामना के साथ आशा रखता हूं कि यह अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for your blessings. Thank you. Thank you. की बात कुछ बच्चों को टॉपिक जो है इंश्योर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और जो आजकल के मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में है, जितने भी वो आपका केमिकल सिंथेटिक बेस्ट है। हम चाह रहे थे न्यूट्रिशन से ऑर्गेनिक ऐसा न्यूट्रिशन गार्डन, ऐसा न्यूट्रिशन गार्डन का आप घर में न्यूट्रिशन गार्डन बनाओ जिसमें कि कुछ आप प्रोड्यूस करो और उस आप ऑटोमेटिकली आप वैल्यू एडेड फूड को अपने दिनचर्या में इंक्लूड करोगे तो वो आपको न्यूट्रिशनली इंक्लूड करेगा और ऐसे क्या हो जाएगा सिक्योरिटी न्यूट्रिशन I don't believe further immunity. We will do much more. As you are immunity, exercise. What provides the result? That's why I'm saying that I'm just giving this topic. Or thank you, ma'am. Thank you. May I request you apply the ma'am? Please, put up hands.
everyone. It's my great pleasure to deliver the word of thanks of this morning session. First of all, I would like to deliver my word of thanks and heartfelt gratitude to Honorable Vice Chancellor Sir, Provost Ma'am, Registrar Sir, or Dean Sir, and HOD Home Science, who have permitted us to organize this seminar in such a crucial condition. When everywhere there is lockdown or such a crucial conditions, they have permitted us to conduct this seminar. So my special thanks goes to our decision makers and parents of the university. My thanks is also a thanks for spending their valuable time for attending this seminar in online as well as offline mode. My thanks goes to Dr. Mr. Chandran, who has traveled from Superfood to attend this seminar. Thank you, ma'am, for taking such a pain for this seminar. My also gratitude goes to all the speakers of national and international level who have delivered their lecture, who have enriched our participants with their valuable and knowledgeable lecture. Thanks to all the speakers of morning session. I deliver my sincere thanks to all the faculty members who have contributed in organizing the organization of this session. And thanks to the technical staff who has thanks to the technical staff and media person and photographers who have spent their valuable time to capture the memory and to extend the program from here to the international level. So my thanks goes to all the members who have contributed directly or indirectly in organizing this seminar. I thanks to the students who have taken pains to come here in this COVID condition. My sincere thanks goes to all the students who are present here in various rooms of this department and all those who have joined on online mode. Thanks to all scholars, thanks to all who might have left, thanks to everybody. Thank you so much. Thank you, Dr. Ma'am. Thank you. सबसे बड़ा क्या कहेंगे लोग? Thank you. मैं अभिनंदन Narayan, University, Darbhanga. The program will be started shortly and one stop Insecurity program will have Narayan, Mithila, Welding द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शीघ्र ही कार्यक्रम द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। किसी तरह के अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत है। विश्वविद्यालय की शोधार्थी द्वारा बनाया गया है। Namaskar, welcome to the International Seminar organized by University Department of Home Science, Narayan, Mithila, University, Darbhanga. The program will be started shortly and one stop Insecurity program will have Narayan, Mithila, Darbhanga द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शीघ्र ही कार्यक्रम द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, welcome to
International Seminar organized by University Department of Food Science, Narayan, University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शिक्षण कार्यक्रम द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। किसी तरह के ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने की संदर्भ करें। विज्ञान विश्वविद्यालय की शोधार्थी द्वारा बनाया गया इंटरनेशनल Seminar organized by University Department of Food Science, Narayan, University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार इंटरनेशनल सेमिनार organized by University Department of Food Science, Narayan, University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। किसी तरह के ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने की संदर्भ करें। विज्ञान विश्वविद्यालय की शोधार्थी द्वारा बनाया गया नमस्कार इंटरनेशनल सेमिनार organized by University Department of Food Science, Narayan, University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार इंटरनेशनल सेमिनार organized by University Department of Food Science, Narayan, University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। किसी तरह के ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने की संदर्भ करें। विज्ञान विश्वविद्यालय की शोधार्थी द्वारा बनाया गया नमस्कार इंटरनेशनल सेमिनार organized by University Department of Food Science, Narayan, University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार इंटरनेशनल सेमिनार organized by University Department of Food Science, Narayan, University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। किसी तरह के ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने की संदर्भ करें। विज्ञान विश्वविद्यालय की शोधार्थी द्वारा बनाया गया नमस्कार इंटरनेशनल सेमिनार organized by University Department of Food Science, विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। नमस्कार इंटरनेशनल सेमिनार organized by University Department of Food Science, Narayan, University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। किसी तरह के ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने की संदर्भ करें। विज्ञान विश्वविद्यालय की शोधार्थी द्वारा बनाया गया नमस्कार इंटरनेशनल सेमिनार organized by University Department of Food Science, Narayan, University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद।
Namaskar, welcome to the international seminar organized by University Department of Food Science, Narayan, Mithila University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय वेद विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शीघ्र ही कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। किसी तरह की ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने में मिथिला प्लेटफॉर्म मिथिला विश्वविद्यालय की शोधार्थी द्वारा बनाया गया है। Namaskar, welcome to the international seminar organized by University Department of Food Science, Narayan, Mithila University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय वेद विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शीघ्र ही कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। Namaskar, welcome to the international seminar organized by University Department of Food Science, Narayan, Mithila University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय वेद विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शीघ्र ही कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। किसी तरह के ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने की संपर्क करें। मिथिला प्लेटफॉर्म मिथिला विश्वविद्यालय की शोधार्थी द्वारा बनाया गया इवेंट प्लानिंग टीम है। नमस्कार, welcome to the international seminar organized by University Department of Food Science, Narayan, Mithila University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय वेद विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शीघ्र ही कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, welcome to the international seminar organized by University Department of Food Science, Narayan, Mithila University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय वेद विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शीघ्र ही कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। किसी तरह की ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने की संपर्क करें। मिथिला प्लेटफॉर्म मिथिला विश्वविद्यालय की शोधार्थी द्वारा बनाया गया इवेंट प्लानिंग टीम है। नमस्कार, welcome to the international seminar organized by University Department of Food Science, Narayan, Mithila University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय वेद विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शीघ्र ही कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, welcome to the international seminar organized by University Department of Food Science, Narayan, Mithila University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय वेद विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शीघ्र ही कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। किसी तरह के ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने की संपर्क करें। मिथिला प्लेटफॉर्म मिथिला विश्वविद्यालय की शोधार्थी द्वारा बनाया गया इवेंट प्लानिंग टीम है। नमस्कार, welcome to the international seminar organized by University Department of Food Science, Narayan, Mithila University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय वेद विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शीघ्र ही कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, welcome to the international seminar organized by University Department of Food Science, Narayan, Mithila University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय वेद विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शीघ्र ही कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। किसी तरह के ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने की संपर्क करें। मिथिला प्लेटफॉर्म मिथिला विश्वविद्यालय की शोधार्थी द्वारा बनाया गया इवेंट प्लानिंग टीम है। नमस्कार, welcome to the international seminar organized by University Department of Food Science, Narayan, Mithila University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय वेद विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शीघ्र ही कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद।
Namaskar, welcome to the International Seminar organized by University Department of Food Science, Narayan, University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय खेल विज्ञान विभाग नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शीघ्र ही कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। किसी तरह से ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने की संभव करें। Netline.com इंफॉर्मेशन विश्वविद्यालय की शोधार्थी द्वारा बनाया गया इवेंट प्लान टीम है। Namaskar, welcome to the International Seminar organized by University Department of Food Science, Narayan, University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय खेल विज्ञान विभाग नारायण विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शीघ्र ही कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। Namaskar, welcome to the International Seminar organized by University Department of Food Science, Narayan, University, Darbhanga. The program will be started shortly. Thank you. नमस्कार विश्वविद्यालय खेल विज्ञान विभाग नारायण विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपका स्वागत है। शीघ्र ही कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। किसी तरह से ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने की विश्वविद्यालय की शोधार्थी द्वारा बनाया गया इवेंट प्लान taking the session. May I request to Dr. Medicinal, please come on the platform. Are you ready? Are you ready now? Are you listening now? Dr. Medicinal. May I request to Medicinal, please come on the platform. Honorable Dr. Nutritional, I will give you the figure of the seminar of this international seminar organized by the Health Department on the topic ensure nutritional security to nutrition during that. Our first keynote speaker is Honorable Dr. Nutritional, former University Department of Home Science, Bihar University. She did this practice from 1995 to 2000. She is an eminent home scientist and specialized in food and nutrition. She is sports coordinator from 1998 to 2004 of UGC Illustration in Welding. She has more than 40 papers
in the national and international journals. She has attended more than 40 national and international workshops, conferences, training programs as speakers, research persons, and chair. Member of several prestigious nutritional society associations, organized several workshops and seminars in the area of food and nutrition during her Okay, ma'am. Are you listening? लोगों के अभी विलेज में है, गाँव में है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोग पता ही नहीं। Please participate and spread. Keep silent, please. Now my next keynote speaker is Honorable Vera, Editorial Conference, Food and Nutrition Department, Chief Scientist from University Professor of BA Branch, Area Research in Nutrition, and she has developed 42 products of fingerless of commercial production funded with projects and with 5 ICR, MPIAD, RDC, Vigyan Prachar, ZBT, all are funding agencies. More than 50% distributed national and international journals through both two companies, one manuals. Other publication book and book chapters में about 8 other publications, attended more than 30 numbers of national and international workshops, conferences, training programs as a speaker, resource person, and chairman. Member of several prestigious nutritional associations, namely RAGHUBAR, NSI, AFS, and ASI. So, Honorable Rekha ma'am, please come on the platform of this international seminar, which is organized by the University Department of Nutrients on the topic Insecurity, Health and Nutritional Security. During that. Please welcome Rekha ma'am on the platform. Please, becoming Thank you, Pragati. First of all, I would like to thank the organizer for giving me an opportunity to share my views on the theme of the workshop, this international seminar. The topic of my presentation, is it clear? I am sharing my slide. Is it clear? My slide is visible? Yes, ma'am, it is visible. Okay. The topic of my presentation today is nutrition sensitive intervention, linking appropriate technologies for nutritional security.
The challenge of nation development is to improve the quality of life across all sections of the society in a sustainable manner. Food and nutrition security plays a central role in this process. Agricultural research and technological development in our country has tremendously increased the agriculture production and aggregate availability, making famine a reality, yet crisis of undernutrition persists. Repeated surveys have confirmed high rates of undernutrition in India. Currently, 36 and 38% of children below the age of 5 years are undernourished and stunted. About 23% of women are undernourished, leading high rate of maternal and child malnutrition mortality. And as you know, this is due to the inadequate intake of protein, energy, and multiple micronutrients, namely iodine, iron, vitamin A, and zinc, which is now an emerging problem. These deficiencies have adverse health outcomes such as retarded physical growth, impaired cognitive development, impaired resistance to infections, and reduced output. These deficiencies have great social and economic impact, which translate into millions of lost years of healthy lives. Our country is the world's largest producer of milk and pulses, second largest producers of fruits, vegetables, wheat, rice, groundnut, sugarcane. Despite this status, 14% of Indian populations are undernourished. The rate of child malnutrition in our country remained highest among the world, with 1 in 3 children being either stunted or underweight. About 46.4 million children below the age of 5 years are stunted, that is too short for the age. 25.5 million are vestige, that is too low for height, and 97 millions are underweight, that is low weight for age. About 38 and 59% of children below the age of 5 years are aged. There is some disturbances, I think. Participants may be asked to mute their microphone. And one study by World Bank has estimated that the cost of malnutrition in India is at least $10 billion and is driven by illness, loss of productivity, and premature death. We will get clear picture when we compare the figures of National Family Health Survey 4 with the previous edition of the survey. The prevalence of undernutrition and stunted have come down from 43.5 to 36% and 48 to 38% respectively. But these figures are still much higher than the world's developing countries average of the 9 and 25% respectively. The prevalence of the wasting has remained almost unchanged during the last 10 years. The prevalence of severe wasting has increased from 6.4 to 7.5%. The prevalence of anemia among the children have come down from 70%, but it is still very high and stands at 59%. The prevalence of anemia among women and men during the last 10 years has barely changed. The proportion of thin men and women have reduced, but at the same time, the obesity in women, men, and children have increased. And it is the matter of concern. Our nation faces double burden of malnutrition. The pandemic COVID-19 has reported to adversely affect the nutritional status of the country. And the poor and the hungry ones are the most affected.
Children are not getting their share of midday meal as most of the educational institutions in our country have been closed, and the supplementary nutrition under ICDS projects through Anganwadis have also been disrupted to a great extent, and it is apprehended that COVID-19 pandemic will reverse the progress made in our country in reducing malnutrition and hunger achieved so far. The repeated surveys have confirmed 2 to 3-fold increase in the prevalence of overweight and obesity, and as you know, obesity is the mother of many lifestyle diseases and thereby affecting the quality of life of an individual. Sorry, I should put it on this mode. India is fast gaining the status of epidemic in the case of diabetes, and countries 77 millions have been diagnosed with diabetes mellitus, and Southeast Asia, India is on the top of the list, and in the world, 1 in 6 adults with diabetes in the world come from India. Cardiovascular disease is the leading cause of death in the world, and in India it contributed 28.1% of total death and 14.1% of total disability adjusted life years in India in 2016. Nutrition situation in India is some sort of silent emergency, and more concern also arises due to the fact that there is not much improvement in the rate of malnutrition over the last 10 years. And in addition to stagnation in undernutrition, India is facing rising tide of obesity and related metabolic disorders, and which imposes important challenges with regard to fine-tuning our agriculture policies to address the issues of both the excess and deficient dietary intake. The food is produced from the agriculture, but world's many malnourished children live in the family who farm for their livelihood. The one key reason of this irony is that the more focus was given on the production of the staple crops such as rice, maize, and wheat. Intervention designed to improve agriculture often focus on increasing the yield of these stable crops, which are rich in energy but deficient in other essential micronutrients. A much greater impact on nutrition can be achieved by shifting this focus to increasing the variety of nutrient-rich foods produced and consumed by smallholder farm families. This requires explicitly building nutrition objectives and indicators into agriculture investments, empowerment of women and small and marginal farm families, nutrition education for dietary diversification, and increasing access to year-round availability of micronutrient-dense foods. The problem of malnutrition is complex in nature. It requires multi-sectoral approach. 3A approach, that is awareness, access, and affordability, is required. Nutrition literacy and awareness at all levels is required for understanding and acting. There is need to improve the access to balanced diet, healthy environment, healthcare outreach, and there is need to enhance the affordability of micronutrient-rich food throughout the year at affordable cost. Emphasis should be on nutrition education. It should be made must for all. Nutrition education for the professional, that is agriculture professionals, medical professionals, social scientists, and other need to be strengthened. The behavior change communication program
to the targeted population will enhance the health and nutrition status of the country. Focus should be on the behavior change of the population, where individuals and community can make informed choice regarding their nutritional needs and food they eat, and also change to a healthy lifestyle. Nutrition component of the school, medical and agriculture curricula needs to be strengthened. There is need to enhance the awareness among the women, consumer, students and teachers on the dietary diversification to achieve a balanced intake of all micronutrients. Since current economic transition has resulted in increased rise in obesity and related metabolic disorders, therefore choosing a right kind of variety of foods in right proportion, appropriate to the level of activity and lifestyle to get optimum nutrition should be focused. Junk food should be promoted among the students of both college and both the school and colleges, and unhealthy diet in the canteen of the school and colleges needs to be banned. This My Plate for the Day has been published by the ICMR and NIN, and this model, My Plate for the Day model, illustrate what should be the proportion of different food groups to meet the 2000 kilocalorie in Indian diet. This model emphasizes that half of the plate should be filled with the fruits, vegetables, tubers and green leafy vegetables, and 40% energy should come from cereal and millets, 17% energy should come from pulses, 12% should come from fats and oil, 10% should come from milk and milk products. And the regular consumption of the food in the proportion as suggested by this model will improve immunity against infection and disease, will prevent diabetes and cardiovascular disease, it will improve insulin resistance, it will prevent hidden hunger, it will maintain alkalinity, which will reduce inflammation, which is the root cause of all the lifestyle diseases, and it also provides adequate amount of fibers, which is essential for health. Focus should be on the sustainable food production, that is efficient resource agriculture production to meet the nutritional needs. Achievement made by our nation during the last 60-70 years has been green revolution and self-sufficiency in food grain production. Currently, our country has achieved record production of 285 million ton, and thanks to green revolution, who has reduced the large scale starvation to a very low extent, and but green revolution has also reduced the crop diversity and impaired the access of nutrients from the pulses, fruits and vegetables. Green revolution fatigue is now being seen in some areas. Low productivity remained a big challenge. In the past, it was often assumed that food grain production will enhance food security, which in turn will enhance the nutritional status of the country, but it has not proven true. Little attention was paid to integrated farming system, which has potential to sustainable evergreen revolution, essential to achieve appropriate crop diversity to ensure nutritional security. Per capita consumption of fruits and vegetables in our country is very low. It is in the range of 185 gram per person per day, against the recommended intake of 500 gram per person per day. As you know,
Adequate consumption of fruit and vegetables are essential to get variety of essential nutrients and phytonutrients, and it can be enhanced by boosting horticulture sectors. For the holistic growth of horticulture sector, National Horticulture Mission was implemented in our country during 2005-06. But under this scheme, emphasis was given on income and export, and insufficient focus was given on the cultivation and marketing of low-cost, locally acceptable green leafy vegetables, yellow vegetables, and fruits. As a result, this is a cheaper source of fruits and vegetables, but these source of these vitamins and minerals are not available throughout the year at affordable cost. Health and nutrition education emphasizing the consumption of these fruits and vegetables will not bring any change in our dietary habit unless and until horticulture resources of the country are harnessed and managed effectively to enhance the production of these fruit and vegetables, which in turn will enhance the availability. There should be production, processing, storage, and transportation in a manner that there should be no glut and distress sale. Only then horticulture sector will be economically viable, and which in turn will enhance the consumption of these fruits and vegetables. Food fortification is universally accepted, low-cost, high-impact intervention implemented in many countries to tackle the problem of micronutrient deficiencies. Food fortification is based on the principle to increase the density of the nutrition through addition of nutrients to a level higher than those found in original food. It is achieved through post-harvest technology or commercial fortification or crop biofortification using modern tools of plant breeding and genetics and biotechnology. Successful example of fortification program in our country is iodized salt for eradication of the goiter, vitamin D in milk, niacin iron in cereal and other grains. Biofortification is an emerging and promising strategy to enhance micronutrient density of germplasm through conventional breeding, molecular marker-driven breeding, genetic engineering, and improved agronomic practices. And the successful storage of biofortification in our country is tryptophan and lysine-rich quality protein maize, between A-rich yellow fresh sweet potato, and recently ICR has released 71 biofortified cultivars of 16 crops. These iron zinc pro between A protein biofortified, these crops have great potential to address the problem of nutritional insecurity in our country. There is need to promote these cultivars among the masses to achieve food and nutritional security of the country. Fortification of a micronutrient poor staple with a concentrated micronutrient rich food is an underexplored strategy need to be promoted for the sustainable solution to the malnutrition. During the harvest season, surplus local fruits and vegetables can be sun-dried, and nutrient concentrated dried leaf powders can be substituted to any cereal flours or pulse flour to an extent of 10%, and those blends can be used for the preparation of any traditional recipes. Some traditional household practices like fermentation and sprouting favor nutrient retention and enhance the viability of the nutrients, therefore need to be promoted. Soybean and millet like crops can be utilized for the enrichment of traditional recipes of different regions. Every locality has some uncommon and underutilized foods which need to be identified, propagated, and consumed to address the problem of micronutrient deficiency on a sustainable basis.
Here I have compared some underutilized nutritive value of underutilized leaves like beetroot leaves, cauliflower leaves, radish leaves, which we often throw away. This is not correct practice. There is need to consume these fruits. As you can see here, the calcium and iron and beta carotene content of most of these underutilized leaves are better than the conventionally widely consumed spinach, bathua and fenugreek leaves. The problem of micronutrient deficiency can be addressed by increasing dietary diversification through homestead production of fruits, vegetables, egg, meat, fish, mushroom, and honey. By practicing nutrition gardening, roof gardening, livestock production, backyard poultry, household fish farming, mushroom cultivation, apiary, and the strategy can be worked out for utilization of wastelands for vegetable production, farm waste and grains which are not suitable for human consumption can be used to feed backyard poultry to enhance the production and consumption of meat and egg. Even at a small piece of land, nutrition garden can be established. We have promoted 6 meter into 6 meter improved nutrition vegetable garden in 6 villages, and this garden has potential to provide 250 to 300 kg per year, which is sufficient to meet the nutritional requirement of a small family comprising 4 members. And even in the period of 6 months, we observe significant enhancement in the consumption of green leafy vegetables and other vegetables among the adopted households. There should be no erosion of the traditional climate-smart millet-based diet. Millets recently has been termed as Nutri cereals because of their nutrient and health benefits, but unfortunately, both production and consumption in the countries have declined significantly, which is a matter of concern, particularly in the states like Jharkhand, Bihar, Odisha, where the maximum number of malnourished children live. These millets are also climate smart and they are less sensitive to climate variability. And they experience less decline in the yield as compared to the rice and wheat under extreme climate condition. And there is also 2 to 3-fold gap between optimal productivity of millets and farm level productivity, and these need to be harnessed to ensure the nutritional security of the nation. Focus should be on enhanced production to consumption of the pulses. Pulses are not only the cheapest source of protein, but they also provide a appreciable amount of micronutrients. In the last 2 decades, there has been progressive decline in pulse consumption, especially among the poor segments, particularly due to the increased demand and rising cost of the pulse. This trend needs to be reversed by research and robust extension effort by adopting local specific appropriate interventions like best management practices, high yielding varieties, intercropping, mixed cropping, etc. There is need to pay special attention to underutilized pulses like soybean and cowpea, which I will deal in details in subsequent slide. Recently, government schemes, policies, projects in initiative under National Food Security Mission, RKVY, BGRI, Bringing Green Revolution in Eastern India, Accelerated Pulse Production Program, Enhancing Breeder Seed Program, Distribution of Mini Seed Kit, Creation of Seed Hubs, conduct of large-scale frontline demonstration has indeed good results in recent years, but more need to be done in this direction for nutritional security.
Post-harvest loss in our country, especially in fruits and vegetables, is quite high, in the range of 20 to 30% due to the lack of storage facilities and value addition. There is need to create storage facility, particularly cold storage chains in rural area, that will contribute to low wastage and which in turn will enhance the availability of these commodities. Value addition should not take away food from the poor. Both high-end and low-cost processed food need to be developed with triple objective of reducing wastage, creating employment, and enhancing nutrition and ensuring nutritional security. Here I have compared millet. As I said, millets, there should not be erosion of the millets. Millets are recently have been termed as nutricereals. Here I have compared the nutrient composition of millets with rice and wheat, as it is clear from this table that these millets are rich in fibers, minerals, also protein in the range of 6.2 to 12.5. Highest protein content is found in foxtail millet, kodo millets. Highest calcium content is found in finger millet. Highest iron is found in barnyard millets, followed by pearl millet. And these millets are also contain appreciable amount of phosphorus, thiamine, riboflavin, and comparable to this rice and wheat, and even better. Finger millet is used to be stable crops of the Jharkhand, Bihar, Odisha, and other many states. It is important minor millets grown in India, and recently it has got special attention due to its nutritional strength in terms of dietary fiber, starch pattern, being high in iron, calcium and iron. It has low glycemic index, therefore it is good for diabetics. Despite this fact, the both production and consumption in many states of the India has declined significantly. In Jharkhand, there were two crops, two millets were very important, used to be the staple food of the local people of the Jharkhand. One was gundli, and another was finger millet. Gundli has totally disappeared from the diet of the local people of the Jharkhand, and the ragi is at the verge of the extinction. And further promotion of these millets required diversification of the products in terms of convenience food, health food, bakery products, traditional food. Keeping this in view, my department has made an attempt and developed many value-added products with the objective to revive these nutricereals in the diet of both rural and urban populations. These are the techniques through which millets, the use of millets can be diversified and consumer acceptability can be enhanced. Malting, ragi has excellent malting characteristics. Like barley, the health drink can be prepared from the malt of the ragi malts, and also the weaning food can be prepared from these malts. Like rice, it can also be the pot. Now technologies are available to prepare flax of the millets, and the millets which are particularly suitable for flakings are ragi, pearl millet, sorghum, foxtail millets. These are the traditional products. I have developed more than 40 traditional products. Few I am depicting here. This is again traditional products. These are like muri ki lai, marwa ki lai can also be prepared. These are the ragi laddu, sev, bakery products of the ragi. We have developed a variety of biscuits by using ragi and other millets. This is the ragi noodles, vermicelli of ragi. This is the pasta products of the ragi. This is chocolate brownie prepared from ragi. Bread of ragi. Now I will discuss soybean. I am discussing these two crops, finger millet and soybean, because
These crops have potential to address both the problem of both undernutrition and overnutrition. Soybean is, due to its nutritional potential, it is called golden beans. It contains 40% proteins and 20% oil. And the amino acid pattern is equivalent in quality to that of milk and egg. As you know, the quality of the vegetable protein is inferior to that of animal protein, but among the plant protein, soybean protein is equivalent in quality to that of milk and egg. It contains twice the amount of minerals as compared to other legumes. It contains a antioxidant isoflavones, which in conjunction with proteins is believed to extend a range of health benefits. Regular consumption of soybean reduce the risk of some cancer. It reduces blood cholesterol. It helps to combat osteoporosis. It reduces menopausal problem in women. Being low in glycemic index, it is good for diabetic patients. Due to untiring research effort of scientists across the world have led to development of a number of technologies and value-added products of soybean. Some I will discuss here. Among these different technologies, the full-fat soya flour is the simplest and have potential to be used in daily diet of the Indian population. This soya flour can be substituted with cereal flour or pulse flour. Initially, 10% substitution is recommended, which can be increased up to 20%, and up to this extent, it does not affect the organoleptic qualities of the product prepared from these blends. And you can prepare any recipe from these blends, it will not affect the organoleptic qualities of the product. As you know, the cake available commercially is dense in energy and low in protein. So fortification of the cake with the soya bean is considered appropriate, and fortification up to a level of 30% soya flour, that is at baker percentage, provides 18.5% protein and 380 calories. Again, the technology is available to prepare soya biscuit, and it provides 50% more protein than the commercial biscuits available in the market. Soya milk is aqueous extract of soya bean, and nutrient composition of soya milk is at par with the dairy milk. Tofu is a wonderful soya food, and at 72% moisture level, it provides 14% protein, 9% fat, and 2% oils. And from 1 kg soya bean, you can get 2.5 to 3 kg paneer. So, we now can conclude, despite the availability of surplus food grains like rice and wheat in the country, malnutrition continues to be a problem. The country is facing double burden of malnutrition and obesity-related problems. Diversification through homestead production of fruits, vegetables, egg, meat, and then integrated farming system, food fortification, along with behavior change to health and nutrition education is a good strategy to increase the household access to income elastic foods. Processing and value addition of foods need to be developed with the triple objectives of reducing wastage, creating employment, and enhancing nutrient content. There should be no erosion of traditional millet-based diet. Thank you. Very well presented, very much related to our seminar topic. Very informative, very well experienced. You have quite right. It's very nice. You have very dynamic and very inclusive. You are superb, and you are really superb into single millets and soya. I think your area is very bright, and so. Thank you very much, ma'am. Thank you for your time. Thank you. Simple as that's very nice. So thanks, ma'am, to you platform and for joining us. Thank you. Thank you.
Now, it's time May I request you, next speaker, Honorable Mithila. We were fighting on the platform. I invite you to be brief about the Honorable Mithila. Former Association part of the home science. Here I have this is a message from 1995 to retirement. She is an eminent home scientist and specialized area food and nutrition from 1998 to post-coordinator of literacy as a state representative. She has more than 30 papers in medical journals and international journals. She has attended more than 40 national and international workshops and conferences, training programs and speakers, research persons and chairpersons. Members of several prestigious nutritional associations organized several workshops and seminars in the area of food and nutrition during her history. It was a newsman, very talented, very versatile newsman on the platform of the international seminars. Please, ma'am, please come on the stage. Please come on the platform. Please come on, it is your job, what is not, the very bad. Please, put your hands together. I will listen now. Yes, I mute your mic. Hello, are you listening now? Please unmute your mic. Shut your face. एक बार कुछ कहानी वाले सुनो एक बार चाणक्य से कुछ लोगों ने पूछा जहर
पॉइजन किसको कहते हैं? पॉइजन किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो घृणा हो, चाहे वो भूख हो, चाहे वो लालच हो, चाहे वो खुद हो। इसीलिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। तो भाई खाइए लेकिन लिमिट में, ठीक है ना? थैंक यू। Seminar is going to be conducted in 4 sessions. First session, international speaker. Then after, inaugural session. After that, keynote speaker session. इसी सेशन में हम आप लोगों का पेपर प्रेजेंट करवाएंगे. Just this man के साथ. After my speech, I will just going to be जितने भी लोग हैं हमारे ऑफलाइन उपस्थित हो, अनुभव को कितने लोग प्रेजेंट करो? Yes. तो फर्स्टली जो है जो आए हैं यहाँ तक उन लोगों को पहले हम ये करें क्योंकि ऑनलाइन में तो ये देख रहे हैं पहले ऑफलाइन वाले को हम प्रेजेंट करवाएंगे, उसके बाद ही हम ऑनलाइन वाले को करेंगे. ओके, थैंक यू. हेलो, हाँ प्रगति आवाज ही नहीं हो रहा है ना, म्यूट था सो खोलो. हेलो, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes. जा रही है आवाज?
वाइस चांसलर साहब आ रहे हैं। ठीक है प्रगति, वेलकम टू ऑल ऑफ यू जो वहाँ प्रेजेंट हैं, सबका स्वागत है। और मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। वो तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट आई वांट टू से ऑल ऑफ यू टुडे, फर्स्ट आई वांट टू से हेल्थ गिव्स होप, होप गिव्स लाइफ, सो स्टे हेल्दी, इंक्रीज इम्यूनिटी, स्टे इन होम एंड सेव योर लाइफ। इस पेंडेमिक में ये बहुत जरूरी है, निराश नहीं होना है, ठीक है। और निराश नहीं होने के साथ साथ आप अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो बढ़ा सकिए डाइट, उसको जरूर फॉलो कीजिए। देन आई वांट टू से nutritional requirements of individual depends upon many factors like age, sex, physical work, physical stress in every situation, either normal situation or in pandemic situation also. Nutrients जो है वो key of our health है। So I request all of you that in today's situation you must take healthy diet and स्पेशली जोड़ दीजिए होममेड डाइट पर। होटल या फूड प्लाजा इस सब का उपयोग कम कीजिए। दूसरी, देन ईट वेराइटी ऑफ फूड्स विद इन ईच फूड ग्रुप्स, either grains, but must take to fulfill the requirement of micronutrients which save our life. You must take fruits and vegetables. अब हम कहेंगे यहाँ पर अपने पीएम का जो स्लोगन है वोकल फॉर लोकल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो चलानी है वो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट आप लोकल में जैसे आप किचन गार्डनिंग कीजिए, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को डेवलप, यू मस्ट डेवलप योर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर लाइक किचन गार्डनिंग, पॉट गार्डनिंग, रूफ गार्डनिंग। आजकल तो छत पर मिले और पूरा उसमें मिट्टी देके और उसमें गार्डनिंग करती हैं। तो जैसे पालक, मेथी, सब का साग जो है ये सब उसमें या थोड़ी जमीन है तो बनाना चाहिए। और कई तरह के लाल साग हैं, इस सबको उपजाना चाहिए। जैसे गार्लिक है, गार्लिक आप ले सकते हैं पॉट में भी, और ऐसे खरीद कर भी लोकल गार्लिक खूब मिलता है। तो इन चीजों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। और ये लोकल वोकल होना है लोकल के लिए, तो जो देहात में उपजता है और नहीं मिल पाता है तो लोकल आप अपने कैंपस में, मान लीजिए कैंपस वाला घर नहीं है तो पॉट प्लांटिंग कर लीजिए, आप रूफ गार्डनिंग कर लीजिए। तो उससे आपको सिक्योर न्यूट्रिटिव सेंसिटिविटी मिलेगी, रहेगी। उसके बाद फूड ग्रुप्स जो है उसमें ग्रेन्स, अभी रेखा ने बताया है रागी वगैरह का, बहुत अच्छा है। रागी का पहले कोई वैल्यू नहीं देता था और रागी का देखिए कितना वैल्यू, मिलेट्स इस सब का हो गया। तो इसमें जैसे पल्सेस है, पल्सेस में मसूर है और मूंग है, व्हीट है, ये सब का जर्मिनेटेड लीजिए तो बी कॉम्प्लेक्स आपको उससे मिलेगा। उसके बाद साइट्रस फूड्स जो है इस पेंडेमिक में बहुत अच्छा है रोकने के लिए। उसके बाद जैसे लिमिट इनटेक आज के सिचुएशन में हम लोगों का होना चाहिए, लिमिट इनटेक। और लिमिट इनटेक हार्ड फैट्स, हार्ड प्रोटीन, एक्सेस शुगर और एक्सेस सॉल्ट का होना जरूरी है। हमेशा हम सजेस्ट करें कि एवरीबडी शुड टेक
लाइट वार्म वाटर रेगुलरली, और जितना लिक्विड आप लीजिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। रेखा ने बहुत अच्छा बताया है, और उतना लंबा न्यूट्रिशन का हम नहीं दे पाएंगे आपको, बट यू फॉलो है। और अवॉइड और मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ हार्ड प्रोटीन्स लाइक एग, डेयरी, पोल्ट्री, फिशेस, और सबसे तो रेड मीट जो है टोटली अवॉइड कीजिए। आज के सिचुएशन में टोटली रेड मीट अवॉइड कीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स में, सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स में विटामिन सी बी कॉम्प्लेक्स आपको अंकुरित अनाज, आंवला, संतरा, अनानास, साइट्रस फ्रूट्स से मिल जाएगा। विटामिन डी के लिए सनलाइट का उपयोग, तो इस गर्मी में हम लोग सनलाइट का ही उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए पालक है, दही है ना, ये सब का उपयोग कीजिए। आलमंड्स है, आंवला है, इनका उपयोग। कैल्शियम रागी में भी बहुत है, ग्रेन्स में, इन चीजों का उपयोग करना चाहिए। और एवरी डे हम लोग को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का उपयोग करना ही करना है। अब हम लोग के सामने एक समस्या है कि जितनी बड़ी आबादी है हमारे इंडिया की, या हमारे स्पेशली और बिहार, उस आबादी में तो इतना पूरा करना मुश्किल है, क्योंकि जहां गरीबी है, जहां 6 बच्चे हैं, एक कमाने वाला है, तो ऐसी स्थिति में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से उतना कहां से मिलेगा। तो वैसी स्थिति में वही वोकल फॉर लोकल आप अपने आसपास के जमीन में या पॉट में उपजाइए और पूरा कीजिए। पब्लिक को इसके लिए मोटिवेट करना होगा। जो अनपढ़ हैं, जो गरीब हैं, जो लो तबके के चिंतन वाले हैं, उनको मोटिवेट करना होगा इसमें, तब होगा। और जो हम लोग पढ़ लिख के भी बर्गर पिज्जा वाले हैं, तो उनको इस बर्गर पिज्जा से मुक्ति लेकर और एकदम अपने घर के बने हुए या अपने आसपास में जो है उसी पर जाना होगा। तब इस पेंडेमिक में हम अपना बचाव कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत डरने की बात मेरे ख्याल से नहीं है। थोड़ी सावधानी अगर बरती जाए, स्पेशली डाइट को लेकर भी, और होम साइंस में तो किचन गार्डनिंग को पूरा महत्व देना चाहिए। जो भी हम लोग होम साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, यंग साइंटिस्ट, हम तो बूढ़े साइंटिस्ट में से हैं प्रगति, तो उनको मोटिवेट करो तुम कि वो पॉट गार्डनिंग अवश्य करें। चाहे जिनके पास नहीं है जमीन, थोड़ी भी जमीन है तो उसको किचन गार्डन के रूप में यूज करें। और रूफ गार्डन के रूप में भी मिट्टी डाल के रूफ पर पॉलीथीन डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल के उसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह देके, और आप साग वगैरह, पालक जो मेन सोर्स है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, उसको आप ले सकते हैं। तो इन चीजों पर थोड़ा, जैसे शिमला मिर्च है, वो पॉट में भी आप ले सकते हैं। रेड बेल पेपर्स जो होता है उसको आप पॉट में भी ले सकते हैं। एंड इट इज द मेन सोर्स ऑफ डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ब्रोकली है, गार्लिक है, जिंजर है, ये सब तो छोटी छोटी जगह में भी हम उपजा ले सकते हैं। तो इस तरह एग्रीकल्चर जो हमारा है वो मेन है, जो इस तरह के जो फूड स्टैगिंग है या फूड का रिसोर्स चाहिए, जो पूरा होना चाहिए, उसको पूरा करने का माध्यम है। ध्यान देना है हम लोगों को कि इस एग्रीकल्चर को कितना अधिक से अधिक उपयोग में हम ले आवें। जैसे देखिए जी, पिछली बार जो मार्च में लॉकडाउन हुआ था, तो उसके बाद जो गरीब वर्ग के मजदूर थे, लगभग 100 मिलियन लेबरर्स जो बाहर बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, बेंगलुरु में थे, वो लोग ये गुजरात पैदल चल दिए थे। और सरकार के सामने बड़ी समस्या थी कोविड-19 में कि इस महामारी के समय में खाद्य सुरक्षा को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि इसकी तो
चार जो इसके खाद्य सुरक्षा के स्तंभ हैं, उपलब्धता, पहुंच, स्थिरता और उपयोग, वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा था क्योंकि लॉकडाउन था। फिर भी ऐसी स्थिति में सरकार ने जहां तक पार लगा वहां तक गरीबों को मुफ्त में अनाज देना, मुफ्त सिलेंडर देना या मुफ्त में दवाइयां बंटवाना, अभी मुफ्त में वैक्सीनेटेड कर रहा है तो कर ही रहा है। लेकिन हम लोगों का भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मोटिवेट द पीपल कि वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को डेवलप करें। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिनके पास खेत है उससे करें, जिनके पास नहीं है, जो बिल्कुल शहरी हैं, फिर भी मकान तो है, पॉट में कुछ इस तरह का लगावें, ऊपर रूफ गार्डनिंग कर लें, किचन गार्डनिंग कर लें, तो उससे बहुत सारी समस्या का निदान हो सकता है। और प्रगति तुम लोगों को तो इस पर प्रोजेक्ट भी बना के और मोटिवेशन के लिए लड़कियों को देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि हर आदमी एग्रीकल्चर से जुड़कर, इसमें स्त्री पुरुष ये सेक्स का ऐसा कुछ नहीं है, सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उसके साथ साथ कुछ ग्रेन्स, इन सब का जब मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे ख्याल से यह समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं रहेगी। और जो तुम्हारा ये सेमिनार का प्रॉब्लम है इतना अच्छा प्रॉब्लम है कि इसकी जरूरत अभी, चूंकि जैसे पूरे विश्व को कोविड-19 जो है प्रभावित किए हुए है, उसी तरह मेरे को तो लग रहा है कि तुम्हारा इस सब्जेक्ट जो है ये पूरे विश्व के लिए मोटिवेशन है, बहुत अच्छा मोटिवेशन है। इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्री सेंसिटिव एग्रीकल्चर ड्यूरिंग पैंडेमिक, तो इस ओर अगर सब सतर्क हो जाए तो बहुत 50% समस्या का निदान ऐसे ही हो जाएगा। और उसके बाद तो गवर्नमेंट कर ही रहा है। और बड़ा अच्छा लगा कि घर में बैठे हुए भी हमको कम से कम ये कहने का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिला तुम लोगों के सामने। प्रगति, और तुम लोग मेरी स्टूडेंट हो, यू मस्ट मोटिवेट योर कैंडिडेट्स, योर स्टूडेंट्स to do something for the society, for the people, for the coming generation. यही मेरा रिक्वेस्ट होगा। थैंक यू टू एवरीबॉडी। तुम दिव्या मेरी स्टूडेंट है, तुम मेरी स्टूडेंट हो और भी उस जगह कई हैं। सबसे हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर बेस्ड मोटिवेशन पैंडेमिक को दूर करने के लिए अवश्य करना चाहिए। उसमें किचन गार्डनिंग, पॉट गार्डनिंग, रूफ गार्डनिंग पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे पालक है, मेथी है या सोया है, इस सब तरह का ये शिमला मिर्च है, ये सब का करके और घर में ही उसका उपयोग करना चाहिए। इस तरह अगर 50% भी आदमी अपना बढ़ा लेगा तो हमारे ख्याल से मार्केट का जो स्थिति है उससे निदान जरूर मिलेगा। ठीक है, इस पैंडेमिक इस सिचुएशन में इतना अगर कंट्रोल हो जाए तो बाकी तो गवर्नमेंट बहुत कर रही है और ये प्रिजेबल है। ठीक है, थैंक यू प्रगति। हम कहेंगे कि प्रोजेक्ट रखो किचन गार्डनिंग वगैरह पर। दिव्या कहाँ है? दिव्या अभी जस्ट नीचे गई है। She is very busy person and that time she is उसके बाद निकली हम लोग। Yes, you are guardian, you are guide, you are everything. So you are very so God bless you, stay healthy, stay in love. ठीक है, Thank you very much. बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ ऐसे ही अपना डेवलपमेंट करती चलो। मार्गदर्शन चाहिए, उसका चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत छोटे हैं आपके सामने।
आशीर्वाद। ठीक है, डेवलप करो अपना डिपार्टमेंट, अपने आप को अपडेटेड करो, अपने स्टूडेंट्स को अपडेटेड करो। जी, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you for giving the lecture. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you for everything. Now, in this particular session, paper presentation, Mithila, by some participants who are trying to present here. जो हमारे presenter हैं यहाँ on the platform, on the premises, उनको पहले हम एक सवाल जाएंगे कि कुछ लोगों को कलर होगा, कुछ लोगों को क्या होगा, कुछ लोगों की फ्लेट नहीं होगी, इसलिए आप एक लिस्ट बनाइए according to this. इस पेपर प्रेजेंटेशन के लिए जो जजमेंट करेंगे वो है डाइटिशियन अनिला। Please give me 5 minutes. Presented proposal judged by the dietitian Anya. Hello, Anya. You have this well. Hello. Yes, Anya. Yes, Anya. Yes, ma'am. Hello. Namaste. Yes. Very good minute. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Welcome you on this platform of international seminar organized by Industry Department of Home Science on the topic ensuring health and nutrition security through education to agriculture during pandemic. Paper presentation session is going to be started, and the presentation will be evaluated or judged by human. Ayla's program is at present working as nutrition program manager in the USAID funded health and nutrition program in partnership with Chutney, both within India and ICS. She has done MSc in food science and applied nutrition from the Aloe Agricultural University. She has done fitness management course from Chile International Bombay affiliated to GCTA Australia. She has done popular health and nutrition courses from National Institute of Health and Family Welfare. US abortion and affiliate product course by the USAID. She has also done from the Global Health Learning Centers. And over 21 years of intensive experiences in the field of health and nutrition gave us an opportunity to explore the challenges faced by all age group of society in their daily life and support them in enhancing their knowledge and all of the practices to lead a healthy life. As a chief dietitian, successfully brought about the change in inclusive possibility from nutrition administration by initiating outdoor dietary service management. Being a former Fit for Life Clinical and Wellness Institute and she as a state nutrition consultant in Jidika, she is working at present. Thank you, ma'am. You have Mr. अभी जो है आप इस प्लेटफॉर्म पर बनी हुई इस सेशन में एटलीस्ट 10 से 12 पेपर प्रेजेंट किए जाएंगे, उसको आप
इस सेशन में इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो होगा वो भी हमारे प्रेजेंटेशन होगा हमारे स्पीकर्स का। उसके बाद कुछ पेपर प्रेजेंट किए जाएंगे, उन सब का एक साथ प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद जो 10 पेपर होंगे उसको अवार्ड किया जाएगा। ठीक है, दैट्स अवार्ड बाय अनिला। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, मेरी शुभकामनाएं सबके साथ। हाँ, यस नंदिनी। Topic ensuring health and nutritional security through Nutri-sensitive agriculture during pandemic. Myself, Dr. Shweta Pradarshini, Assistant Professor in PG Department of Home Science, BRA, Bihar University. Today, my paper presentation's topic is optimal nutrition to fight against COVID-19. We are in a country where people are more concerned about taste than nutrition, those who are prosperous. Another segment of population is struggling for one-time meal. The concept of nutrition is beyond their imagination. Considering all these scenarios, we are in urgent requirement to plan an optimal nutrition to fight against COVID-19. Optimal nutrition involves balancing of key ingredients and nutrition to meet the requirements of a person for basic maintenance of physiological function, for growth and for reproduction and lactation. Good nutrition can help to reduce the risk of some infections and diseases including heart disease, diabetes, stroke, some cancers and osteoporosis. Optimal nutrition has been visualized as that which maintains a level of metabolic normalcy so that when the organism is exposed to stress, the normal protective homeostatic mechanism can be put into operation rapidly with a minimum of strain and for a short a time as possible. These may vary considerably depending upon individual biological variability, sex, age, and both exogenous and endogenous stress. Balanced and optimal macro and micronutrient intake provides some important foundation for good health. Micronutrients are essential for a myriad of body functions, playing indispensable and diverse roles as coenzymes, structural components, pro-hormones, components of body fluids, antioxidants, and many more. Today's lifestyle and eating habits often result in unbalanced diets, with many people not even meeting ideal levels of all essential nutrients. Also because each individual has his and or her own biochemical individuality or distinct nutritional needs which must be met for optimal well-being, the ideal may not be adequate. Many factors can further increase individual nutrients requirements such as smoking, alcohol abuse, chronic dieting. Eating a well-balanced diet rich in fruits and vegetables and taking a high-quality, scientifically balanced, multiple vitamins mineral supplement is an
can ensure that our individual nutrient needs are met. Nutrients that have been identified as critical for the growth and function of immune cells include vitamin C, vitamin D, zinc, selenium, iron, and protein, including the amino acid glutamine. Keep the immune system opposed with helpful plant-based foods. As coronavirus COVID-19 has impacted communities around the world, many people have wondered whether there are steps they can take to stay healthy. Right. Eating a low-fat, plant-based diet may help give the immune system a boost. The immune system relies on white blood cells that produce antibodies to combat bacteria, viruses, and other invaders. A plant-based diet has also been shown to reduce inflammatory biomarkers, minerals, vitamins, and antioxidants. Studies have shown that fruits and vegetables provide nutrients like beta-carotene, vitamin C, and vitamin E that can boost immune function. Because many vegetables, fruits, and other plant-based foods are also rich in antioxidants, they help to reduce oxidative stress. Beta-carotene. Beta-carotene is a powerful antioxidant that can reduce inflammation and boost immune function by increasing disease-fighting cells in the body. Excellent sources include sweet potatoes, carrots, and green leafy vegetables. Vitamin C and E. Vitamin C and E are antioxidants that help to destroy free radicals and support the body's natural immune response. Sources of vitamin C include red peppers, onions, almonds, strawberries, guava, broccoli, mangoes, lemons, and other fruits and vegetables. Vitamin E sources include nuts, seeds, spinach, and broccoli. Then comes vitamin D. It comes vitamin D. Research shows vitamin D supplements may reduce the risk for viral infections, including respiratory tract infection, by reducing production of low-inflammatory compounds in the body. Increased vitamin D in the blood has been linked to prevention of other chronic disease, including tuberculosis, hepatitis, and cardiovascular disease. Food sources of vitamin D include fortified cereals and plant-based milks and supplements. Then comes zinc, the last one. Zinc is a mineral that can boost white blood cells which defend against illness. Sources include nuts, pumpkin seeds, sesame seeds, beans, and lentils. In a summary, no one food is recommended over another, and eating a variety of food will help to maintain a health-balanced diet, and of course, good hygiene practice remains the best means of avoiding infection. Good nutrition supports the body throughout the right course from birth to old age. A balanced diet, including all food groups, supports an effective immune system and may provide protection against infections and other diseases. Thank you so much for hearing and watching me for a long time. Thank you, Pratita. Thank you, Shweta ma'am. Thank you. Nice presentation. Very well presented. Very thank you. Thank you very much. May I request Mr. Roshi Karara? His conversation. He will मैं उर्वशी रिसर्च स्कॉलर फूड साइंस डिपार्टमेंट एनएमयू दरभंगा की छात्रा हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आज अपना टॉपिक पारिवारिक संबंधों पर कोविड-19 के प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सन 2020 सदी का सबसे खराब वर्ष रहा है। संगीत से पहले आई सभी आपदा, अकाल
महामारी, प्लेग और हैजा, कुछ भी हो, इनसे बचने के उपाय सभी इंसान के पास हैं। भूकंप और बाढ़ भी मनुष्य के मन को आहत नहीं कर पाए, परंतु सन 2020 में मनुष्य के मन को और मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा असर डाला है। इस समय एक साथ नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बदलाव दिख रहे हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन जैसे प्रयासों के जहां सकारात्मक प्रभाव सामने आ रहे हैं, वही इनका एक नकारात्मक पहलू भी है। लॉकडाउन ने लोगों को घरों तक सीमित कर दिया है और इसका असर उनके पारिवारिक संबंधों पर हो रहा है। भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्तों की तो काफी कमजोर हो चली थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण देश भर में लगे लॉकडाउन में आपसी समझ और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का मौका मिला है। परिवार के सदस्य एक दूसरे को पूरा वक्त दे रहे हैं और अधिक से अधिक साथ बिताने में आपसी समझ भी बढ़ी है। महामारी खत्म होने के बाद सामाजिक स्तर पर बड़ा बदलाव होगा। भारत में हर युग के परिवार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भारतीय संस्कृति में तो संसार को भी एक परिवार के तौर पर देखा जाता है। भारत ही अकेला ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश दुनिया को दिया और हम आज भी मानते हैं कि सुख और दुख के हर घड़ी में हमें दुनिया के साथ खड़े रहना चाहिए। कोरोना वायरस भी दुख की ऐसी घड़ी है और इस संकट ने परिवार के महत्व को नया आयाम दे दिया है। यही वजह है कि मुसीबत की इस घड़ी में हर कोई अपने परिवार के पास लौटना चाहता है, चाहे कोई करोड़पति हो या कोई मजदूर। हर किसी के लिए इस समय परिवार ही सबसे बड़ा सहारा है। परिवार में एक अजीब सी शक्ति होती है और इसी शक्ति की वजह से हर कोई आखिरकार परिवार के साथ रहना चाहता है। संकट में जो परिवार बनकर खड़ा हो जाए वही तो परिवार होता है। आंखों के टपकने से पहले भी तुम्हारे दर्द को पी जाए वही तो परिवार होता है। और जो संकट के अंधेरों में हौसलों की रोशनी बन जाए वही तो परिवार से मिला प्यार होता है। संकट के इस घड़ी में परिवार का साथ और एहसास है जो हर दर्द को और हर चुनौती को अपनी एकजुटता के सामने छोटा साबित कर दिया है। कोरोना वायरस ने लाखों परिवारों पर पहाड़ बनकर टूटा है, लेकिन इस चुनौती ने परिवार के डोर को और मजबूत किया है। जिसके पास करोड़ों रुपए है वह भी अपने परिवार के पास लौटना चाहता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भी परिवार को गले लगाने की प्यास है। कोई दूर में पैदल चलकर, कोई एक दूसरे का हाथ थामकर, कोई मजदूर को सीने से लगाए तो कोई आंचल में बच्चों को धूप से बचाए, सिर्फ परिवार तक पहुंचने की राह देख रहा है। कोरोना वायरस ने परिवार की अहमियत को एक बार फिर साबित किया है। जिस दौर में संक्रमण के डर से कोई किसी मजदूर की मदद करने को तैयार नहीं है, उस दौर में कोरोना वायरस ने परिवार ही है जो आप बनाता है। कोरोना वायरस ने बहुत सारे परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है। कई परिवारों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई हैं, लेकिन परिवार उस संस्था का नाम है जो बिखरने के बाद भी सब कुछ संभालने का मात्रा रखती है। कोरोना वायरस के संक्रमण का एक तस्वीर यह भी है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद अंतिम यात्रा में उनके परिवार लोग भी शामिल नहीं हो पाए। उनका अंतिम संस्कार सरकारी अधिकारियों ने किया। हालांकि भारत के लोगों के लिए यह संसार भी उनका परिवार है। वसुधैव कुटुम्बकम के रास्ते में चलने वाला भारत संकट के इस दौर में पूरी दुनिया के लिए वो मरहम बन गया है जिसका इंतजार 10 और कम से छिपी ये दुनिया कर रही थी। परिवार का कोई सदस्य अस्पताल के बिस्तर में कोरोना से लड़ रहा है तो कोई कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में कोरोना वॉरियर बनकर जी जाएगा। कोई मीलों तक का सफर सिर्फ अपने परिवार से मिलने के लिए तय कर रहा है और कोई अपनों को बचाने के लिए जी जान से लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस ने और परिवार को सिर्फ मजबूत किया है। कुछ मामलों में इस संकट ने इन रिश्तों का असली चेहरा भी दिखा दिया है। कुछ देशों में बुजुर्गों को उनके हाल में छोड़ देना हो या फिर परिवार के किसी संक्रमित व्यक्ति से भावनात्मक दूरी बना देना हो। ये सब घटनाएं बताती हैं कि परिवार संकट में मजबूत होते हैं तो कई बार इनकी दीवारें भी दरकने लगती हैं। वही दफ्तर के लिए सहकर्मियों और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा रहते थे उनसे भी दूरी बढ़ने लगी है। अर्थव्यवस्था बंद होने से रिश्तों पर आर्थिक दबाव भी पड़ा है। नतीजा यह है कि रिश्तों की जोड़ खिंच गई है, तनाव बढ़ गया है। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ के, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। पहले जब
आगे बढ़ते थे तो उनके आस पड़ोस के लोग और दोस्त भी परिवार का हिस्सा बन जाते थे। लेकिन कोरोना वायरस के इस दौर में ये सब बदल रहा है। अब जैसे ही लोगों को किसी कोरोना से संक्रमित होने की खबर मिलती है तो लोग उस व्यक्ति और उसके परिवार से दूरी बना लेते हैं। जो लोग कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों के साथ भेदभाव करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि अब भेदभाव समाज के बीच एक खाई पैदा कर सकता है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उन लोगों के साथ भेदभाव या गलत व्यवहार कर रहे हैं जिन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ है। इनमें डॉक्टर, पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। आज के दौर में परिवार संभालना और परिवार की जरूरत का ध्यान रखना आसान नहीं है। कोरोना वायरस ने इस काम को बहुत मुश्किल बना दिया है, लेकिन फिर भी परिवार से मजबूत कोई ऐसी संघ नहीं है जो संकटों से बचा सके। जीवन में खुश और स्वस्थ रहने के लिए पैसा नहीं, अपनों का साथ और सच्चा प्यार बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीमारियों से लड़ने के लिए बेहतर इम्यूनिटी पावर होना अच्छी बात है, लेकिन खुश रहना उससे भी बड़ी सौगात है। जो अपने परिवार, अपने करीबी लोगों के बीच खुश रहना जानता है उसे कोई भी दुख हरा नहीं सकता। संकट के इस दौर में प्यार और रिश्तों को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानकर चलिए। आप और आपका परिवार इस संकट से अगर बच गए तो पैसा आप कभी भी कमा लेंगे। आने वाले समय में पैसा तो क्या कमा लेंगे, लेकिन न तो यह परिवार दोबारा आएगा और न यह प्यार दोबारा मिलेगा। इसलिए कोरोना से बचने के लिए चेहरे पे तो फेस मास्क लगाइए, लेकिन रिश्तों पर पर्दा डालने से बचिए। खुलकर बात कीजिए, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ लेकर अपने परिवार के सदस्य करिए। तुम डरो मत, मैं हूं ना। यही परिवार की ताकत है और इस परिवार की इस ताकत को पहचान कर आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you, Lucy. Thank you. Well, presentation. Very nice. Now, I request Kiran, Assistant Professor, Environment, Darbhanga. May I request Kiran Garima? Are you listening? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please. Yes, ma'am. I am sharing my screen. I am not able to sharing my screen. Please allow me to share my screen. It is my request to technical assistant to share my screen. Please allow me to share my screen. Pragati ma'am. Okay. Still, I am not able to share my screen. Move your slide. Start your slide. Okay. This is visible. Please confirm me, ma'am. This is visible. There is a problem in sharing slides. Okay. I got it. My screen is visible.
Please confirm me, ma'am. Yes. Okay. Can you visual? Can you visual? Everything is visual? Okay. Thank you so much, ma'am. A very warm good afternoon to everyone. Myself, Kiran, Assistant Professor, Home Science Department, MRM College, Darbhanga. And the topic of presentation is Superfood, Moringa oleifera, Nutritional Properties and Health Benefits. As we all know, good nutrition is fundamental to improving immunity. The best advice is for a healthy immune system is to consume locally available fruits and vegetables. In this reference, I am here presenting about one of the most nutritious and versatile vegetable, that is Moringa oleifera or domestic. In local language, we call it surgeon. This is rich in nutrients, so many benefits. Have you started your journey to great health? It is also called as miracle tree because this is rich in so much nutrients, and it is also helpful in combating various diseases. Now, introduction. Moringa oleifera is a plant that has been praised for its health benefits for thousands of years. It is rich in many nutritional compounds, that is antioxidants, and it also contains bioactive plant compounds like polyphenols, flavonols, etc. Moringa oleifera belongs to a family of Moringaceae, is an effective remedy for malnutrition. Moringa is rich in nutrition owing to the presence of a variety of essential phytochemicals present in its roots, pods, leaves and seeds, etc. We can say that all parts of this tree are very essential for our health, and it has the loads of many nutrients. Now, nutritional properties. Moringa contains many helpful compounds like vitamins. Vitamin A, B1, B2, B3, B6, folic acid, ascorbic acid, calcium, potassium, iron, magnesium, phosphorus, zinc, etc. Moringa oleifera is a storehouse of important nutrients. The leaves of Moringa oleifera are rich in minerals like calcium, potassium, zinc, magnesium, iron, and copper. And it also contains a calcium in a very high amount. As we can see in this paragraph, that 8 ounces of milk can provide 300 to 400 milligram, while Moringa leaves can provide 1000 milligram calcium, and its powder can provide more than 4000 milligram calcium. Moringa powder can be used as a substitute for iron tablets, hence as a treatment for anemia. We can see in this picture that Moringa contains 4 times more vitamin A than carrots, 3 times more potassium than banana, and 7 times more vitamin C than oranges, and 3 times more vitamin E than almonds, and 4 times more calcium than milk, and 3 times more iron than spinach. We can say that Moringa is very high in nutrients. Now, medicinal properties. Due to its high content of nutrients, it has more medicinal properties. Moringa oleifera is very important for its medicinal value. Various parts of this plant, such as leaves, roots, seed, bark, fruits, flower, and immature parts, act as cardiac and circulatory stimulants, such as anti-tumor, anti-inflammatory, anti-ulcer, anti-spasmodic, anti-hypertensive, cholesterol lowering, antioxidant, anti-diabetic, hepatoprotective, etc. Now, Moringa leaves are rich in many nutrients, including vitamins, minerals, and many other nutrients. It is helpful in lowering blood sugar level, and it can reduce inflammation, and it also helps in lowering the cholesterol level. And it is also rich in antioxidants, so that it can be helpful in the treatment of cancer.
and it is also helpful in our immune system. It boosts our immunity due to its high content of vitamins, antioxidant, anti-inflammatories, amino acids, etc. And in this figure, we can see that these plants provides many benefits in preventing many diseases, it increased mental clarity, and it has high antioxidant property. It acts as anti-inflammatory, and it stimulates hair growth, and it enhances skin health, and it acts as anti-cholesterol, and etc. And it is rich in 92 nutrients and 46 antioxidants, 36 inflammatories, 18 amino acids, and 9 essential amino acids. Now, there is medicinal uses of different parts of Moringa. The leaves of Moringa tree are helpful in asthma, hyperglycemia, dyslipidemia, heartburn, malaria, pneumonia, diarrhea, headache, scurvy, etc. And the parts of this tree are helpful in diarrhea, liver and skin problems, joint pain, etc. And flowers are helpful in lowering hypercholesterolemia, and it acts as anti-diabetic agent, urinary problem, etc. And the root or bark of this tree act as a cardiac stimulant. It helps in the cardiac problem. It acts as anti-ulcer agent, and it acts as anti-inflammatory, anti-aging, cardioprotective, etc. And the seeds of this tree are helpful in hyperthyroidism, Crohn's disease, anti-hypersimplex virus, rheumatism, gout, cramp, etc. So we can conclude that all parts of Moringa oleifera are very helpful and very rich in nutrients. Moringa provides a powerful punch of nutrition and might have an anti-inflammatory nature. Their antioxidant properties combined with their intelligent health protective properties make them a new Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please conclude, ma'am. Please conclude. Okay. Now, I can say that I want to just recommend that consume this miracle parts of miracle vegetables, that you can maintain your good health and maintain your immunity very well. Thank you very much. Thank you very much, Pragati ma'am. Slides and presentation all are very awesome, very and main job with you. You learn to take away always. Thank you. May I request Mamta Kumari is on stage. Lalit, donation. ममता कुमारी रिसर्च स्कॉलर विज्ञान विश्वविद्यालय। मेरा टॉपिक है बच्चों को कोरोना वायरस से लड़ने में स्वास्थ्य और परिवार को स्वस्थ रखना, लोगों को मुक्त रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है। इसमें भी बच्चों की सब बात आती है तो माता पिता को विशेष ध्यान रखना होगा। बच्चों को अधिक केयर करना, खान पान उसके लिए जरूरी गतिविधियों के साथ इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाना भी हमारे बड़ा मकसद होता है। कहा जाता है कि कोई भी बीमारी भोजन नहीं होता है, इसका इलाज भोजन द्वारा ही किया जाता है। ऐसा प्राकृतिक अवस्था के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक प्रतिरक्षा प्रणाली, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका शारीरिक गति कभी पूरी तरह से अपने लिए घर नहीं होता है, यानी शरीर प्रतिरक्षा पर निर्भर होते हैं। जब तक वे नवोदित 6 महीने की आयु नहीं हो जाते वे अपने नंबर एंटीबॉडीज का उत्पादन नहीं कर पाते। प्रतिरक्षा एक भारी पदार्थ के खिलाफ अवशिष्ट होती है, जैसे जुकाम के लिए कोरोना वायरस की शुरुआत पिछले चीन की वुहान प्रांत के सीप और पोल्ट्री बाजार में हुई थी। आज दुनिया भर के लिए गंभीर मामला हो गया है। वो वायरस आज तक 70 देशों में
जीवाणु का प्रभाव हो तो माता और भी बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क हो जाती है। बच्चों का बीमार होने का मुख्य कारण होता है कमजोर सिस्टम, बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि सामान्य परिस्थिति में भी बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं, जो कि बहुत ही बच्चे अच्छी प्रतिरोधक शक्ति होने की वजह से लंबे समय बीमार नहीं होते हैं। इसका कारण है कि हमारे शरीर में क्या बैक्टीरिया वायरस का मौजूद होते हैं। एक शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली 2 से 5 महीने तक परिपक्व नहीं होती है। उनमें पहले शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विशेष रूप से सेल मध्यस्थ विकसित हो जाती है। बच्चों की प्रतिरक्षा में सुधार करना, यदि आपका बच्चा 1 साल से कम आयु के होते हो तो उसके लिए माँ का दूसरा होता है। बच्चे को इम्यूनिटी बनाने वाले सारे पोषक तत्व उसमें मिलते हैं। बच्चों को सही और संतुलित आहार दें। बच्चे को फल और सब्जियां खिलाने की आदत डालते हैं। छोटे बच्चे ज्यादा सक्रिय होते हैं, इसलिए बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां पौष्टिक आहार खाने के लिए देने चाहिए, जैसे केला, सेब, संतरा, अंगूर, लहसुन, अदरक। ये विटामिन डी की एक मुख्य स्रोत है। तो सुबह अपने बच्चों को दूध सेकने के लिए ये बच्चे इम्यूनिटी के लिए आवश्यक है। लहसुन, अदरक और मसाले में पाए जाने वाले पोषक तत्व किसी प्रकार के वायरस के हमलों को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। काली मिर्च, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च, दालचीनी, विभिन्न जड़ी बूटियों में भी काम आता है। पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि बच्चों को हाइड्रेट रखना कितना करने की सुरक्षा प्रणाली कोशिकाओं को प्रभावित करता है। बच्चे की नींद की वक्त को बढ़ाएं, बच्चों को योग के लिए प्रेरित करें, बच्चों की स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखें, परिवार को स्वस्थ रखें। Thank you a lot. Very nice to do it. And after that, may I request Kumar, stage, please put your hands together. यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षक लोगों को मेरा प्रणाम और सभी जो उनसे सीनियर है, जूनियर से सभी को गुड आफ्टरनून। आज इस सेमिनार इंटरनेशनल सेमिनार के माध्यम से मुझे कुछ बोलने का मौका दिया गया है। मेरा टॉपिक है कोविड-19 से लड़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की भूमिका। कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमण है जिसमें व्यक्ति को सर्दी, जुकाम और सांस लेने जैसी समस्या हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही जल्द ट्रांसफर होता है, इसलिए इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है। सरकार सामाजिक दूरी रखने को जोर दे रही है ताकि इस वायरस से बचा जा सके। लोगों की प्राथमिकता विश्वास और स्वास्थ्य खान-पान और स्वच्छता का मुद्दा अचानक से काफी ऊपर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले लोगों की प्राथमिकता नहीं, ये पहले भी लेकिन इस चीज के प्रभाव भी जोर शोर से ध्यान दे रहे हैं। स्वच्छता हमारे जीवन शैली की वो बात थी जिसमें पसंद को ज्यादा तरजीह दी जाती है। डॉक्टर की सलाह भोजन में फल, सब्जियां और सलाद की मात्रा बढ़ाए। खाली पेट के प्रसिद्धि मेडिकल न्यूट्रिएंट्स डॉक्टर कहते हैं कि घर के अंदर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग से वायरस संक्रमित व्यक्तियों से दूर रखता है, मगर शरीर के रोग प्रतिरक्षण क्षमता नहीं बढ़ाता है। इसके लिए शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित आहार में फल और सब्जी, स्वाद की मात्रा को बढ़ावा देनी चाहिए। इसको वायरस से लड़ने के लिए पोषक तत्वों का आहार, भोजन के शरीर तत्वों, विटामिन, पोषक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सभी जानते हैं कि हम जो भी खाते हैं इसका मतलब बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हमारी दर्द करती है कि हम कैसे हैं, हमारे वजन, ब्लड शुगर और दूसरी मेटाबॉलिक क्षमताएं हमारे आने पर निर्भर
काम करते हैं, लेकिन ये हमारी पे काम नहीं करता है। इसके लिए बहुत ही जरूरी है इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में ध्यान देना, जो मौसमी बीमारियां और समस्याओं से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। कोई भी भोजन पूरक बीमारी को रोक नहीं सकता है, लेकिन नियमित रूप से अपने समग्र पालन की योजनाओं में पोषक तत्वों को शामिल करके अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने में मदद कर सकता है। इम्यूनिटी को और ज्यादा बरकरार रखने के लिए दूसरे पोषक तत्व विटामिन सी शामिल करके सांस से जुड़ा इन्फेक्शन में अहम भूमिका निभाती है और आपका संक्रमण और टीबी जैसे रोगों में विटामिन सी मौजूद रहती है, जो इस कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। हमारी इस टॉपिक का यह इसका ये निष्कर्ष निकलता है, हमारी इस भूमिका का यह निष्कर्ष निकलता है कि इस कोरोना नाम की महामारी में हमें स्वयं की रक्षा और अपने परिवारों की रक्षा स्वयं ही करनी है, जिसके लिए साफ सफाई और सुधारों द्वारा चलाई गई आदेशों का पालन ध्यान में रखते हुए करना है। खासकर हमें कोरोना नाम के वायरस से निपटने के लिए अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखना है। इसके लिए हमें अपने खान पान पर अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए पोषक तत्वों में जो भी पोषक तत्व से विटामिन सी से लड़ने के लिए अधिक आवश्यकता वसा खनिज नमक जिन चीजों में या पोषक तत्व पाए जाते हैं उसको अपने आहार में शामिल करना है, ताकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत है और स्वस्थ है। Thank you so much. So thanks. May I request Soya Kumar Singh? Soya Kumar Singh, please come on stage. Please come on. इस इंटरनेशनल सेमिनार में डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस यूनिवर्सिटी दरभंगा के साथ स्कॉलर इंटरनेशनल सेमिनार का हमारा जो टॉपिक है वो है पोषण का आदि पोषण वाटिका। हम बात करते हैं कि पोषण वाटिका क्या है। पोषण वाटिका पानी का एक आसान साधन है जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियों एवं फलों को एक एक्सक्लूसिव फसल चक्र एवं प्रबंधन विधि के द्वारा उगाया जाता है। यह किसी भी प्राचीन विधि और समुदाय की इकाई का एक अधिक अंग है। साथ ही हम बात करते हैं पोषण का पोषण वह अवस्था है जिसमें पोषक पदार्थ और भोजन उपलब्ध लेने के कारण शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है और जिसके कारण हमें समस्या पैदा हो जाती है। मिल रहा है पोषण और पोषण वाटिका कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इसलिए हमारा जो उद्देश्य है कि एक परिवार को सब्जी मिलती है, साथ ही रसोई करके पानी और पूरा करके इस्तेमाल करके हम बात करते हैं कि पोषण वाटिका के महत्व और लाभ। पोषण वाटिका का महत्व नहीं विधि विज्ञान के एक प्रयोगशाला के रूप में विभिन्न फार्मूला की जानकारी प्रदान करती है। साथ ही पोषण वाटिका से लाभ यह है कि पोषण वाटिका लगाकर महिलाएं अपनी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकती है। पोषण वाटिका के लिए स्थान या आकार का चयन तो जमीन की उपलब्धता, परिवार के सदस्यों की संख्या और समय की उपलब्धता पर निर्भर होता है। अब हम संक्षिप्त में पोषण की बात कर रहे हैं। सही पोषण सबके लिए आवश्यक है। 0 से 2 वर्ष के बच्चे गर्भवती और आदि महिलाओं के लिए उचित पोषण का ध्यान रखना जाना अत्यंत आवश्यक है। घरेलू स्तर पर पोषण सुनिश्चित करने के लिए पोषण वाटिका बहुत आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि पोषण वाटिका का वर्तमान में कोरोना को लेकर देश में कोहराम मचा हुआ है। बड़े अर्थशास्त्री विज्ञान के आंकड़ों को लेकर परेशान दिख रहे हैं। सरकार के मामले में भी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। लेकिन सरकार को ग्रामीण भारत के प्रबंधन को लेकर और गहराई सोचने की जरूरत है। वर्तमान परिस्थिति में पोषण वाटिका कॉन्सेप्ट पूरे देश में सफल है। इस मॉडल को ग्रामीण भारत में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। सरकारी स्तर पर पोषण वाटिका के प्रचार प्रसार से देश आर्थिक और रोजगार की समस्या से निजात पा सकता है।
कोशिश मांगेगा कि हमारे पोषण की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, साथ ही समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लास्ट में मैं यही जानना चाहूंगी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस गवर्नमेंट ने एक अच्छी गारंटी दी जाए। Thank you, sir. Thank you very much. Lots of thanks. Many, many thanks. Now, I would like to invite Kanchan Moringa. Kanchan Moringa is on stage. Please welcome. कमेटी के चीफ मेंबर एसपीसी डॉलिसिना एचओडी मैम डॉक्टर विद्या ऑब्जेक्टिव सेक्रेटरी डॉक्टर प्रगति मैम मेंबर डॉक्टर उषा मैम डॉक्टर कविता मैम डॉक्टर श्वेता मैम रिचोर्स पर्सन रंजीत मोदी जी का सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बड़ी गर्व की बात है जहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मुझे लिखने का अवसर मिला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा भी जीवन पर है, तो मेरा जो टॉपिक है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड ही है। टॉपिक है इम्यूनिटी एंड हेल्थ, प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य। इम्यूनिटी के आधुनिक विज्ञान में प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। इम्यूनिटी शरीर की टॉक्सिन से लड़ने की क्षमता है। ये टॉक्सिन वायरस, हानिकारक या अन्य हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है, ये बीमारियों से हमारा बचाव करती है। इम्यूनिटी के मुख्य दो प्रकार हैं, प्राकृतिक इम्यूनिटी और आर्थिक इम्यूनिटी। प्राकृतिक इम्यूनिटी जब भी शरीर पर किसी प्रकार की प्रतिरोधकता हमला होता है या बिना ये उपस्थित होता है, इसलिए इसे जब इम्यूनिटी कहते हैं, ये हमारे शरीर में जन्म से पाया जाता है। आर्थिक इम्यूनिटी या प्राप्त होती है, इसे हम अर्जित करते हैं खान-पान के द्वारा, खेती के द्वारा, इसलिए इनके इम्यूनिटी कहते हैं। स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य को केवल बीमारी से जोड़ना उचित नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों में होने का नाम नहीं है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य एक शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णता संतुलित परिस्थिति है। केवल रोग एवं दुर्बलता का नाम निर्धारित स्वास्थ्य नहीं है। वास्तव में स्वास्थ्य शब्द पूरी तरह से भावनात्मक और शारीरिक उच्चता की स्थिति को दर्शाता है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन में आने वाले तनाव को संभालने के साथ साथ लंबे और सक्रिय जीवन जीने की पूंजी है। स्वास्थ्य के पास बेहतरीन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक, ये सभी आपस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि किसी एक में कमी हो जाए तो सभी प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए संतुलित भोजन लेना चाहिए, उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ सभी का ध्यान रखना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहिए। अभी वर्तमान में कोविड-19 से हम सभी ग्रसित हैं। कोविड-19 का जब तक वैक्सीन नहीं आया, हम लोग उसके बाद एक मास्क तरीके से लड़ सकते हैं, और वो है हमारी प्रतिरक्षा तंत्र। अगर हमारा इम्यूनिटी मजबूत है तो हम कोविड-19 से भी बच सकते हैं। इसलिए हम लोग अपने इम्यूनिटी को और हेल्थ को अनदेखा न करें, उसके लिए समुचित पोषण लें और लापरवाही न बरतें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। Thank you. Please
Mr. Sagar, please. Please go on stage first. 1 minutes. 1 कैंसर से बचाए कैंसर से बचाने में मदद करता है कई तरह की बीमारियों में मदद करती प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है जीवाणु और वायरस संक्रमण से बचने में मदद करती है इम्यूनिटी में ऐसी शक्ति होती है रोगों को सही से बाहर निकालने की सहायता करती है व्यक्ति के रोगों को लड़ने में आगे होती है लंबे समय तक शरीर की सुरक्षा करने में मदद करती है I'm sharing my screen.
Hello? Hello? Hello, ma'am? Yes, ma'am. Sorry. We all are aware about the effect of the aloe vera in boosting our immunity. In this COVID time, we have tried different type of kadas, soup, chutney, isn't it? We all have tried to boost our energy. That's the role we are going to take the benefit of the aloe vera. I have done in my research work, I have prepared 3 treatments of tomato chutney and aloe vera leaves, and one was control. The control was prepared using the normal standard method of preparing tomato chutney, and the 3 treatments T1, T2 and T3 were prepared using different level of incorporation of aloe vera leaves at the rate of 10%, 15% and 20%. Hello. The method used to prepare the chutney was used using the tomato, onion, jaggery, and in the treatment we have used 10% of aloe vera in T1, 15% of aloe vera in T2 and 20% of aloe vera in T3. After this, all the recipe were organoleptically evaluated by the judge. The judge were chosen from the department only. The panel of 5 judges selected from the department member, and they rated the chutney on the basis of hedonic scale. The result which I found was that in the field of color, the treatment T2 rated the best, and the list was scored by the T3. In which the incorporation of aloe vera was 20%. It means T2 with the aloe vera incorporation of 15% was best. In the field of texture, the tomato chutney, the aloe vera leaves impart some types of crunchiness in the T3 and T2 variety, but T1 was acceptable. In the taste and flavor, there was no significant effect of aloe vera incorporation in taste and flavor. The result which I found was the color was overall acceptable for the T2 and was rated least for the T3. In the texture, the T1 was best, and in taste and flavor there was no significant effect. Thus, I want to conclude by saying that it can be, we can easily incorporate aloe vera leaves suitably in our recipe made for the tomato chutney. Aloe vera with the incorporation level of 10% was best. So I request all of you to incorporate aloe vera in our daily diet to boost our immunity. Thank you. Now, technical question 3. इसमें हमने स्टार्ट रिक्वायर्ड और
in application ensuring health nutrition, secure, sensitive agriculture, and impact. As well as chief scientist in University and SOE in Home Science Department of Property she is very she has very party. She has done lots of research there and such lots of projects and Hello, good afternoon to everybody. Am I audible? yes, you're audible. Just I'm sharing the screen, it will be coming. No, actually, yes, she's chief scientist and professor of Moringa. She has developed lots of products and different and she handles lots of projects and so many books are presented or published in different journals and international journals, so many books and compendiums and so many publications, different books and chapters and monographs, and more than traditional workshops, conferences, training programs, as a speaker, researcher, and chairman. She's a member of several prestigious nutritional associations. So, please bring Thank you so much. Whether my screen is visible? Hello? Whether my PPT is visible? I have shared actually the screen. Again, I am going to share the screen after share. Now, so it's not coming. Are there? Hello, आवाज नहीं में. So आवाज नहीं में. Hello. Yes. Okay.
हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो, आवाज में नहीं जा रही है क्या? स्लाइड है? हेलो हेलो, Slides, slides are visual and they are present how to ensure health and nutrition security in city agriculture during pandemic. And first of all, I would like to say, like everyone, stay home, stay safe, wear mask, and how we can win this problem. So first of all, the points to discuss this nutrition and immunity, and nutrition for better nutrition and immunity, and accumulate seeds and low food vegetables through nutrition garden. Clean up food and vegetables in daily diet. Are also in daily. So now we are knowing that the dancers good health is the focus was of growth and body tissue. But it is mental being health, healthy life during now coming to health and nutrition, then to nutrition and immunity. All these nutrients are very much essential for our body, and out of that, carbohydrates, fats, and proteins are energy and body building. Besides that, vitamins and minerals are very much important, and that's why we call it protective foods, because these nutrients only protect our body. Even if we are taking that carbohydrate, fats, and protein rich food, then also we are telling that we are suffering from hidden hunger. And these nutrients, they are having that states behind within it to provide immunity to our body. So health, immunity, and nutrition, all three are very much important. Health only will come through nutrition. Immunity also will come through nutrition. If immunity will be developed, then definitely we will be healthy. But how nutrition will come? Nutrition will come from agriculture, and whenever we talk about nutrition, then macro and micro, or both nutrients will come under this, and only agriculture, and that's what we are calling nowadays that agriculture and nutrition linkage. We consider nutrition sensitive intervention, that all those agriculture produce which can provide, which can protect our body, that should come under this nutrition specific nutrition sensitive indicators. Only then we can ensure food and nutrition security. When we are talking about the Bihar, then we are having that food availability, but as well we have poor nutrition in our state. So children under 5 are stunted and wasted. Prevalence of iron and other micronutrient deficiency disorders are there. Lifestyle and degenerative diseases
which are more or less related with micronutrient deficiency. These problems are very much common, and when we will go for any survey, and hardly there will be 4 to 5% people who will be healthy. They will not have any lifestyle or degenerative diseases. If we are talking about that people more than 45 years old, then there are so many regions, and availability and accessibility of micronutrient-rich food by every people is one of the most important regions. So we have enough food to eat. Still, we are malnourished, whether undernourished or overnourished. We can say that where India is the place of India throughout the world, India is having the micronutrient deficiency, that is vitamin A, iron, and zinc. When we that all those food which are available in our state or in our country, they have been divided into here we have divided it into 12, but number 10 and number 9, these groups are not being covered by the FAO for the 10 food group system. So when we are seeing there where vitamins and minerals are there, green leafy vegetables, all vegetables, fruits, these are the underutilized fruits and vegetables. They are very rich source of vitamins and minerals. But we can see ourselves, our dietary habits, that how often we are consuming these fruits and vegetables. When we are saying that how immunity will be developed, we talked about all these micronutrients. So for the proper immune system, the epithelial barriers, cellular immunity should be there. Antibody production should also be there. So the cells which produce antibody, all those cells should be strengthened. So we can see that epithelial barriers. We will show that how epithelial barriers are working in our body. So we can see that vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. These are the nutrients which can strengthen our epithelial systems. And that epithelial cells will act as a barrier to protect the body from any viral or bacterial infection, especially viral, because we are talking during this COVID-19. Then the immune cells, that whenever we are talking about immunity, proper immunity, then our immune cells should be strengthened. Then we can see that all these vitamins and minerals, they are very much required for the strengthening of our immunity cells, and even that when we are getting that vaccines, but that vaccination is one system that will protect our body, because in that also it develops antibody in our body. But again, that for the antibody production, all these micronutrients will be there. If these nutrients, we will be deficient in all these nutrients, then even after the vaccination, problems can arise in our body. So body's capacity, how the immune response, how it develops, it reacts with the immune system. Suppose we are host, and there some pathogens are coming. So that interaction, host and pathogen interaction depends upon the dose and virulence, that how harmful is that pathogen in our body, and that will decide the nature of disease and death also. If we are very much strong, and that is being affected by our nutritional status and environmental factors. If we are living under the polluted environment, again that pathogen, the work of pathogen will be very high, and nature of disease that will be very, very, very serious. Even if we are malnourished, then in that case also the problem will arise. So whenever we are talking that we are talking immunity in two fast, innate and acquired immunity. Innate immunity, that is non-specific immunity, we can strengthen in our body, and then it can prevent entry of microbes in the body. We are talking about that vaccination, that is the acquired immunity. So we are preferring to strengthen our innate immunity, because present time COVID-19 has come. So
for so many years some other virus may come. So we can strengthen in our body. So immunity rich food should be there in our daily life. So when pathogens are coming in our body, our epithelial cell acts as a barrier, and the mucus, that mucus binds that pathogens, and through mechanical system like cough and sneezing, it removes mucus intact microbes. And that is the reason that we are telling every people to put mask on their face. So even if they will cough or sneeze, that will not affect other people. So it is very much important when we saw that how immunity cells or epithelial barriers or antibody production cells, producing cells can be strengthened by the incorporation of all vitamins and minerals, different vitamins and minerals in our body. So vitamins with micronutrients are very much essential for development, maturation, and functioning of immunity cells. This is, besides other functions, it is a very important function because we are talking in present difficult situation. So besides that vitamins and minerals, it contains phytochemicals also. That phytochemicals helps in the proper cell metabolism and disease prevention processes also, so that our health can be maintained. We can go for the good health. We can maintain the good health in our body. Just like phytochemicals, how it works. It works as antioxidant. It works as detoxifying agent. Whatever toxicants we are taking in our, whether it is the natural toxicants or other toxicants, and the detoxifying agent should be there in our body. Then blocking and suppressing agent just like garlic. So these antioxidants, these vegetables, these are having antioxidants. We can say that these are the green vegetables. It looks like these are very simple, but their capacity to protect our body is very high. Here, green vegetables have the beta carotene, vitamin C, vitamin K, iron, calcium, folic acid, fiber. Fiber is also one of the most important that will not come under energy, but it can provide bulk to our diet. So we should definitely take the fruits and the vegetables in our daily diet. And how it can be used, and all some of the fruits and vegetables we have practiced it that can be grown under that kitchen garden. We can say that nutrition garden. Now it is called as nutrition garden. We can say immunity garden also. So how we can grow all these fruits and vegetables in our places. We are telling that the population so that they should grow fruits and vegetables. That home-based menus should be used, and one can enjoy fresh, immune-rich fruits and vegetables in the daily diet. And we can motivate others also to grow fruits and vegetables and consume them. Because definitely we have become very advanced and we are taking fast food. But if our health will be maintained, then only our body can enjoy fast food also. So we should give less preference to fast food and more preference to all these foods. First of all, health is there, and without health, there is. That's why it is called health is wealth. We have practiced in the school nutrition garden, and we got that how the different fruits and vegetables can be grown. These are respective vegetables which can be grown in the nutrition garden throughout the year. These are some of the glimpses of nutrition garden which we have practiced in the Ankuran program along with UNICEF and Government of Bihar and Department of Education. First of all, we practiced it in 100 schools of Purnia district. Now it has scaled up for all schools throughout across the state. So sometimes what happens that people are not having or in the school also they did not have enough space to grow in that
campus. So in that case, they have used for the rooftop also for the nutrition garden. We can grow different plants, and if it will be required, then we can grow some fruits and vegetables also in the plants. So sometimes 2-tier, 3-tier system, even with less space, people can grow fruits and vegetables in their kitchen garden or nutrition garden. Even though it is feasible with the marginal and landless families also, how they can grow that in the pot or in the bucket or whatever. If they will think the importance of this, definitely to ensure the health, because whenever we are talking about health and nutrition, this is not only for the people who can purchase the fruits and vegetables, but this health and nutrition is the right for each and every individual of the state or of the nation across the different age groups people. So space management, it can be done, how it can be done, and then when we are talking about this, it is very much essential because so many nutrition and our home science groups are here, and this is a seminar. We want to say that if all these students and staff will think that we have to ensure proper health, food and nutrition security to our population, then definitely this awareness program should be there. It can be incorporated into our research program also, because how to eat, this is very much important, how to eat. If we have the nutrient-rich food, then also we waste our nutrients from the food, and nutrients are going in the dustbin, and we are consuming something with less nutrient food. So this is very much important. We have already shown that how 10 food group systems are there by the FAOs, and minimum 5 food groups, daily consumption of minimum 5 food groups should be there. It means that if we are not maintaining the inclusion of 5 food groups in our daily diet, then definitely we are deficient with one or more nutrients. That is very much important. So we are these are the Anganwadi workers, and whatever some districts we have selected, during that whatever food they are eating, in that like Moringa and all these other green leafy vegetables, they are using it in their daily diet. And incorporation, because we cannot change our food system, but we can incorporate nutrients in our daily food system. So this is very much important, how to introduce, how to incorporate nutrients in our daily diet, so that our diets will be healthy. It is very much important. We are not saying that you develop a special food, but whatever foods are there, that should be nutritious. They are the some home-based, food-based approach was there, and which we practiced on to cure that severe acute malnutrition among the children below 5 years of age. So even that Ayush Mantralaya, they have given some tips that how to fight against COVID-19, and here the first one was the drink warm water throughout the day, and second one the yogasana pranayam, and third that is the nutrition, that is spices like turmeric or haldi, jeera, dhania and lasan. What we were talking about, how it can develop how it acts as antioxidant or detoxifying agent or blocking or suppressing agent. So not only it can develop capacity to fight pandemic COVID-19, but it can develop capacity in our body to fight all these degenerative diseases also in our body, what we are facing daily. And most often you will listen that somebody is suffering from cancer or kidney or some stones, gallbladder stones, heart problem. So many problems are there. Even gallbladder stones are there. So people are not eating stones. So how stones enter in our body? So whatever that some minerals or some
toxicants used to be there in our body. If these are not being detoxified, then it can accumulate and it takes the form of stone in our body. So Ayurvedic immunity promoting measure is that this is the Ministry of Ayush. Recommendation is there to take Chavanprash and herbal tea, golden milk, that is very very important, that haldi powder. It contains curcumin, and the curcumin is the excellent, versatile, excellent antioxidant in our body. So these are the some of the measures: ginger, turmeric, garlic, puदीना, tulsi. Before that, earlier also people were taking, and generally most frequently people were not taking the medicines from the medicine shop, but they were taking that long garlic, turmeric, ginger juice they were taking, and time has come to incorporate all these things in our daily diet so that we can develop innate immunity through nutrition, and that can develop that can strengthen our immune system. Our different body systems can be strengthened and our health can be maintained. That is one of the main reasons how to ensure our health through ensuring food and nutrition security. So that right food, right nutrition, not only the right food, but food with nutrition, little with asana pranayam and good habits, that can definitely strengthen our body systems also. Thank you. Very well executed. You are super mom, you are full of life, and God bless you, live long, stay healthy. But now, आपको ऐसा है कि ये जो पूरा सेमिनार, इसमें इंटरनेशनल सेमिनार है, और बहुत जो के लिए जो नेशनल का कोर्स है, और ये चल रहा है, वैसे कंडीशन में बच्चों के दूसरी जो परेशान किया उसमें परेशानी में हम थोड़ा उसमें हिस्सा हो गया है, लेकिन जो है मैम यदि आपके बारे में मैं बोलूँ तो आपको कोर्स गाइड कोर्स मेंटर कोर्स टीचर सब कुछ आपको और thank you for your visits and your guardian, you are very good administrator also. So अच्छे से कितने सारे प्रोजेक्ट्स को बैठेंगे or 700 projects, and product development about 160, and commercialized product out of 160 job are commercialized, and established and organization of the nutritional lab with the medical routine वगैरह established किए हैं, और nutritional lab भी established किए हैं. Extraordinary sales, experience sales, natural sales, drumming sales, was like really. Thank you for joining us. Thank you for coming. Thank you for giving us time. Thank you for accepting our information. Thanks a lot. Thanks, and so many thanks. Thank you. आपको आवाज आ रही है? बोलिए. Am I Now, I would like to invite Katisha and on the table. I think I have given a brief about and in front of the she was there, participated, presenting paper.
ma'am. Can you share my slide now? Please go ahead your slide. Hello, Pragati ma'am. Yes, ma'am. Can you share my slide now? The slide is not full. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Can you share my slide now? Slide now. You are audible, but your slide is not visible. Ma'am, can you share my slide please? Yes, yes. Yes. Another slide. वही से प्रयोग कीजिए मैम, जहाँ पे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हेलो मैम। पागल Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ से तो शेयर नहीं कर पा रहे हैं।
Yes, ma'am. विदाउट स्लाइड आप उसको जो है प्रेजेंट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ओके। बच्चों को समझा करके अपने जो हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं वैसे हेलो। हाँ, आप सबको मेरा नमस्कार। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बीइंग ए डाइटिशियन, बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट, मैं चाहूंगी कि इस समय कोविड-19 को लेकर के जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, डाइट को की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, फूड की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी पहले से भी हमारे फैमिली में जो मेंबर्स हैं, अलग अलग ग्रुप के, एज ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग लाइफ के फेज में हैं, तो कैसे हम बीइंग ए डाइटिशियन हम किसी को डाइट के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि सभी को हम एक ही प्लेट से एक ही तरह के फूड ग्रुप्स के बारे में तो बताते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशन में उसी फूड ग्रुप्स के उसी न्यूट्रिएंट्स को हम अलग प्रोपोर्शन में सजेस्ट करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसी के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कोविड-19 में क्यों फूड का एक इम्पोर्टेंट रोल आया है और इस किस तरीके से फूड में कौन से न्यूट्रिएंट्स है, फूड का कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कोविड-19 में हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इनहेंस कर सकता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि हमारे जो किचन में जो ट्रेडिशनल स्पाइसेस है, कॉन्डिमेंट्स है, हर्ब्स है, वो किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकती हैं। जो हमारे घर में हमारे दादी नानी के समय से जो खाना बनाया जा रहा है, वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हर एक फैमिली में कहीं ना कहीं कोई बुजुर्ग होते हैं, या उस घर में छोटे बच्चे होते हैं, या उस घर में कोई प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन होती है। तो इस पेंडेमिक में ये जो स्पेशल वल्नरेबल ग्रुप है, उसका किस तरीके का डाइट होना चाहिए, उसको कैसे हम इसी इम्यूनिटी के साथ हम उनको कैसे डील कर सकते हैं थ्रू द डाइट प्लान। इसके साथ हम लोग देखेंगे हमारे फैमिली मेंबर्स में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस होगा। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस का मतलब डायबिटीज हो सकता है, रेनल फेलियर हो सकता है, लिवर डिसऑर्डर्स हो सकता है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है। तो ऐसे लोग भी हमारे घर में हो सकते हैं, या हमारे आसपास हो सकते हैं, या हम जिनको डाइट बता रहे हैं वो लोग हो सकते हैं। और इन सभी को लेते हुए हम कैसे एक इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट उनको सजेस्ट कर सकते हैं। उससे भी बड़ी बात ये होती है कि हम अपने प्रेजेंटेशंस के द्वारा, सजेशंस के द्वारा लोगों को एक उनके सब्जेक्ट पे उनकी नॉलेज एनहांस कर सकते हैं, उनके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर जब हम डेप्थ में जाएं तो कई बार इन इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिस में अडॉप्ट करना, दैनिक दिनचर्या में इनको लाना, सुबह से रात तक के खान पान में इनको लाना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ वहां पे रुकावटें होती हैं, वहां कुछ हिंड्रेंसेस होते हैं, बैरियर्स होते हैं। तो उसमें कैसे हम उन बैरियर्स को, उन हर्डल्स को हम हटा सकते हैं बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग ए डाइटिशियन, एंड कैसे हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि एक सस्टेनेबल वे में, सस्टेनेबल वे मतलब केवल आज पेंडेमिक है इसलिए नहीं, हमारी इम्यूनिटी हमारे लिए हमेशा जरूरी है। तो हमेशा के लिए हम अपने प्लेट में हाउस होल्ड लेवल पे कैसे फूड और न्यूट्रिशन को सिक्योर कर सकते हैं। तो आज की प्रेजेंटेशन का यही कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों के साथ बातों ही बातों में कवर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि कोविड-19 एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज है। कई प्रकार के इन्फेक्शियस डिजीज हैं। इसके पहले भी भयानक भयानक बीमारियां आई हैं, जैसे आप ट्यूबरक्लोसिस है, आपने HIV एड्स का नाम सुना होगा, हेपेटाइटिस बी का नाम सुना होगा। बहुत से लोग हमारे ऐसे जो इन तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज को उनके फैमिली मेंबर में देखा जा सकता है। वो उसको पहले उनके फेज में कभी उन्होंने उसको फेस किया होगा, लेकिन आज वो उसके साथ उस कॉम्प्लिकेशंस में कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है एंड क्यूरेटिव मेजर्स क्या है। प्रिवेंटिव मतलब हम उनको होने ना दें, और क्यूरेटिव मतलब अगर वो हो गए हैं तो हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इन सब चीजों को हम समझ रहे हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारियां के साथ हम जीना सीख गए हैं। अभी यहाँ जरूरत है कोविड-19 के साथ भी हम कैसे अपने आप को एक लाइफस्टाइल में ढाल सकते हैं, और उसके साथ हम अपनी नॉर्मल डेली लाइफ को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको जानने के लिए हम फूड पे आते हैं। तो जैसे कि फूड को आपने सुना होगा 3 मेन फंक्शन होता है
एक तो होता है कि हमारे लिए एनर्जी की जरूरत है, दूसरा हमारे बॉडी बिल्डिंग एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो आज ज्यादा ही फोकस हो रहा है वो है कि हम अपनी बीमारियों से कैसे लड़ सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करना। और जैसा मैं थोड़ा जिस सेक्टर में काम करती हूँ, हम लोग डायरेक्टली कम्युनिटी मेंबर के साथ इंटरेक्ट होते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ जो कि इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं, एंड डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो कि डायरेक्टली जिनके प्लेट में ये चीजें जाएंगी और उनका इम्पैक्ट हमको हेल्थ में आउटकम की तरह देख सकते हैं। तो जब हम उनसे बातें करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वो आपकी तरह न्यूट्रिशन का उनको कोई बैकग्राउंड मिला हो, कोई जरूरी नहीं कि आपकी तरह वो स्टूडेंट्स रहे हो, देन इवन देन ये ऐसा एजुकेशन है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, उनको समझाने के लिए हम लोग उनको बताते हैं तिरंगा भोजन खाओ। तिरंगा कौन सा 3 रंग? हमारे देश की झंडे जैसा 3 रंग। ये 3 रंग क्या है? ये तीनों जो रंग है अगर आप लोग देखो तो हमारे जो अभी उषा मैम बता रही थी 5 फूड ग्रुप्स, तो एटलीस्ट जो फैमिली डायवर्सिटी की बात करें हम, तो 10 फूड ग्रुप्स में से 5 जरूर हमारे प्लेट में होना चाहिए ईच फैमिली मेंबर के। और अगर छोटे बच्चों की बात करें जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पर रहते हैं तो 7 में से 4 होना चाहिए। तो अब ये 5 को हम कैसे जज करेंगे? अगर हम गांव में बात करें, हम किसी ऐसे, तो वो आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर हमारी प्लेट 3 कलर से है जो हमारे देश के झंडे के कलर है, तो बहुत हद तक हम अपने डाइट में ऐसे फूड न्यूट्रिएंट्स को शामिल कर रहे हैं जो हमको क्या दे रहा है? एक सिक्योरिटी दे रहा है हेल्थ की। और यहाँ पर जो हम इम्यूनिटी सिस्टम की बात की कि यहाँ पर अभी क्या हो गया है, एक ऐसा दौर आया है, एक ऐसा पेंडेमिक आया है कि माल न्यूट्रिशन को लेकर के जो हम अभी बहुत बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते रहे हैं, एनर्जी फूड गिविंग फूड की बात करते रहे हैं, अब उतना ही इंपॉर्टेंट कि हमको इम्यूनिटी गिविंग फूड की भी बात करने की जरूरत है। जब हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो मेन फोकस हमारा, जैसे अभी पेंडेमिक में है, वो न्यूट्रिशियस फूड है, लेकिन न्यूट्रिशियस फूड के साथ कुछ और उसके साथ कंपोनेंट्स हैं जिनको हम अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम फल खरीदते हैं और उसको धोते नहीं है और अगर हम उसको ऐसे ही खाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स उतने यूजफुल नहीं हो सकते जितना उसके थ्रू जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाते हैं। तो इसीलिए कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस को भी अभी हाईलाइट किया जा रहा है। यू नो वेरी वेल दोस प्रैक्टिसेस हमारे ट्रेडिशन में शुरू से है, जिसमें वी नीड टू मेक इट अगेन पॉसिबल इन आवर डेली प्रैक्टिस, लाइक हैंड वॉशिंग है, बेदिंग है, फुटवेयर एंड क्लोथ्स। तो जब भी हम हमेशा हमें हाथ धोने की आदत डालनी है, हमेशा हमें रेगुलर नहाने की जरूरत है, और जो भी हमारी चप्पलें हैं या जो भी बाहर के पहने हुए कपड़े हैं, उनको बाहर के पहने कपड़ों को जैसा हमें शुरू से सिखाया गया है, हमको उनको घर में नहीं पहनना चाहिए। तो अगर हम इस तरह के कुछ प्रयास हमेशा करते रहेंगे तो फूड के साथ साथ ये प्रैक्टिसेस हमें हेल्प करेंगे इन्फेक्शन से हमको दूर रखने के लिए। अब हम बात करते हैं कि और हमारे डाइटरी गाइडलाइंस क्या होना चाहिए एंड हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए इस समय। तो डाइटरी गाइडलाइंस का अभी जितने भी मैम लोग आप लोग के साथ शेयर कर रहे थे, सभी लोगों ने बताया कि हमारा जो फूड होना चाहिए उसमें राइट चॉइस होना चाहिए। हमारा फूड केवल भात और आलू या जो हमारे पसंद का जंक फूड या हमने पेट भर लिया कोल्ड ड्रिंक से, दिस इज नॉट द राइट चॉइस। सो हमारे प्लेट में राइट चॉइस होना चाहिए हेल्दी डाइट के लिए। अब ये राइट चॉइस कैसे हम सब के लिए, क्योंकि हम अलग अलग इकोनॉमिक क्लास से आते हैं, तो हम सब के लिए वो कैसे पॉसिबल है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम फैंसी चीजों के पीछे ना जाएं। हम जिन चीजों को एडवर्टाइज किया जाता है उनके लिए वो हमारे लिए उतनी जरूरी नहीं। वी नीड टू फोकस ऑन द लोकल फूड्स, वी नीड टू फोकस ऑन द सीजनल फूड्स, होल ग्रेन्स, जितने भी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जो हमारे यहाँ आसानी से मिल जाते हैं, उन्हीं को हमको अपने प्लेट में शामिल करना चाहिए। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे, इजिली अवेलेबल भी होंगे, एंड एनी ग्रुप ऑफ आवर सोसाइटी कैन इजिली मेक इट पॉसिबल। अदरवाइज दूसरी चीजों की बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड्स, जैसे कि सील बट्टे पे मसाले या अन्य चीजों को पीसना, चटनी वगैरह इसी पे बनाना, जाते का इस्तेमाल जो होता है, लोहे के बर्तन में खाना बनाना और ढक करके जैसे बनाना, कुछ ऐसे जो मेथड्स है जिसको कि हम इस्तेमाल शुरू से हमारे घरों में किया गया है, अगर हम वापस उस तरफ लौटे, हम उन तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करें, उन तरह के मेथड्स को इस्तेमाल करें, तो क्या होगा, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो और ज्यादा प्रिजर्व होंगे और हमको अवेलेबल हो पाएंगे।
साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डूज के साथ साथ डोंट को भी फॉलो करना है, क्या नहीं करना चाहिए। आजकल के लाइफस्टाइल में इट्स सो इजी फॉर ईच वन ऑफ अस टू एंजॉय द जंक फूड्स, सम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड एनी काइंड ऑफ द रिफाइंड प्रोडक्ट्स, एनी काइंड ऑफ फैट्स ऑन ऑयल्स। तो ये चीजें जो होती है सेकेंड साइड में, इनमें तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे नहीं होते हैं जो हमको बहुत कुछ दे सके, साथ ही साथ इनमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स डाले जाते हैं जो कि हमारी वर्किंग कैपेसिटी, हमारी इम्यूनिटी कैपेसिटी, हमारा डेवलपमेंट कैपेसिटी को क्या करते हैं, वो घटा देते हैं। तो हमें इन चीजों को लिमिटेड करना चाहिए। और साथ ही साथ हमको अभी के लिए, जैसे कोविड के लिए बोला जाता है, शुरू से ये है कि हमें धूप का सेवन करना चाहिए। कोविड-19 में विटामिन डी का भी एक अपना रोल है। तो खान पान के अलावा बहुत से ऐसे स्रोत होते, जैसे लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करना, धूप में बैठना, वहां से भी हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो धूप की रोशनी का भी, सनलाइट में भी बैठना हमारे लिए अच्छा होता है। और जब हम अपने हेल्थ की बात करते हैं तो नॉट ओनली द डाइटरी इनटेक, not only the energy intake, we need to work on the energy output also, because it makes our body more healthy when we go parallelly with the dietary intake and the exercise. तो हमारे दिनचर्या में एक्सरसाइज होना भी बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी से टॉक्सिसिटी का निकलना, हमारे बॉडी के एक एक ऑर्गन्स का एक्टिव होना, ऑक्सीजन सप्लाई होना, वहां पर मसल्स हेल्दी होना। सो इन सब के लिए नॉट ओनली द टेकिंग ऑफ immunity boosters, we need to work on our physical activity also. So especially when we are not allowed to go outside, we are allowed to work from home, study from home, we should have some time for any kind of the yoga, any physical activity. आपको कोई जिम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सीढ़ियां इस्तेमाल कीजिए, रस्सी कूदिए, थोड़ी देर टहलिए, anything you can manage it at your हाउस होल्ड। क्योंकि आज मेरी चर्चा आपके साथ इसी बात पे कि हम अपने घर में हम किस तरह की प्रैक्टिस को इजीली, कॉस्ट इफेक्टिवली एक्सेस कर सकते हैं, उसको अवेलेबल करा सकते हैं और सस्टेनेबल वे में हम उसको लेके चल सकते हैं। सस्टेनेबल मतलब हमेशा के लिए। तो ऑल टुगेदर एक अच्छी लाइफस्टाइल जो हमें नॉट ओनली फॉर द पेंडेमिक, इन द फ्यूचर फॉर ऑल मेनी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है। इट्स इंक्लूडिंग डाइट के साथ साथ हमारा एक्सरसाइज, हमारा मेडिटेशन, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारा स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। पेंडेमिक के लिए ही नहीं, सो मेनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने चाहिए। तो बहुत सी चीजें मैं वापस दोहराना नहीं चाहूंगी, क्योंकि सुबह से मैं बहुत से पेपर प्रेजेंटेशन पे सुन रही हूँ, हमारे सीनियर्स मैम को भी मैं सुन रही हूँ, और स्पेशली आज का टॉपिक ही ऐसा है, ये ज्वलंत मुद्दा है इम्यूनिटी बूस्टर्स पे बात करने का, न्यूट्रिएंट्स पे बात करने का। तो ऑलरेडी वही रिपीटेड है, कुछ विटामिन है, विटामिन ए, सी, डी, ई है, कुछ मिनरल्स लाइक जिंक, सेलेनियम, आयरन, कॉपर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, अमीनो एसिड्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, एंड अदर, उसके अलावा some probiotics and prebiotics है। These are the major nutrients which need to be taken proper care to fight not only against this pandemic in any kind of the infection and to keep ourselves healthy. तो जैसे कि मुझे आपके साथ थोड़ा सा आहार पोषण जो तालिका हो सकती है, जो किसी को हमें बताना है, उस पर बात करनी है। तो थोड़े कुछ सोर्सेस भी होते हैं जिस पर हम लोग बात करना चाहते हैं, ताकि हम किसी को हम लोग न्यूट्रिशन बैकग्राउंड के, तो वी कैन टॉक अबाउट द जिंक, सेलेनियम, विटामिन B6 एंड B12 एंड फॉलिक एसिड। बट जिनके साथ हम बात करें अपनी मम्मी के साथ, या राशन खरीदते समय, या कुकिंग करते समय घर पे बात कर रहे हैं, तो हम उस लैंग्वेज की जगह हम रिपीट करते हैं जो रिसोर्सेज है उसको। तो हमें उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत है कि वो क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमारे किचन में, हमारी शॉपिंग में, ग्रोसरी में, हमारे फूड प्रिपरेशन, हमारे मील सर्विंग में, हमारे प्लेट में शामिल होना चाहिए। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स स्पेशली बात किया गया, जैसे उसमें सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली थ्रू द वाटर। आप डाब पानी है, नींबू पानी है, अभी कोई बता रहे थे ग्रीन टी भी ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, मट्ठा ले सकते हो, एनीथिंग जो इजिली आपके यहाँ आपके बजट में आता है। ये हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी से टॉक्सिसिटी को निकालने के लिए, आपकी बॉडी के अदर बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वर्क है, उसको पूरा करने के लिए। तो अलोंग विद दिस न्यूट्रिएंट्स वी नीड टू कीप आवर बॉडी
वेल हाइड्रेटेड। फिर उसके साथ ही प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हीलिंग बहुत तेजी से करता है, रिकवर करता है ना। हमें पोस्ट जब हमने आपसे कहा कि नॉट ओनली द प्रिवेंटिव मेजर्स, वी नीड टू टॉक अबाउट द क्यूरेटिव मेजर्स ऑल्सो। क्यूरेटिव मतलब हम बीमार पड़ भी गए तो हमको जल्दी हीलिंग के लिए, जल्दी रिकवरी के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। एंड यू नो वेरी वेल द सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन, एनिमल एंड वेज के बहुत सारे प्रोटीन है, दलहन है, दूध से बनी चीजें हैं, मांस मछली अंडा है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नट्स है बहुत तरीके के। तो जो भी हमारे घर में हमारे खान पान, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंगली जो कुछ भी है, इसमें से कुछ ना कुछ हमें लेना चाहिए। और जो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है, बहुत विशेष मैं डीप में नहीं जा सकती हूँ, अभी हम लोग के पास इतना समय नहीं है, लेकिन हाँ, जब हम प्रोटीन की बात करें तो गुड क्वालिटी प्रोटीन को जरूर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाने में सक्षम होते हैं। उसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इम्यून सेल्स की जो फंक्शन कैपेसिटी होती है उसको एनहांस करता है। तो कोहड़ा का बीज है, आपको तरबूज का बीज है, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, ये सब इतनी कॉमन चीजें हैं, हम लोग फेंक देते हैं इन सब चीजों को, और इतने आसानी से मिलते हैं। अगर हम इनको सैलेड्स में, इनको जैसे मसाले डालते उस तरह से ड्रेसिंग, सैलेड ड्रेसिंग्स कर, ऊपर से आप जैसे हरी धनिया डालते हैं वैसे, या आप जैसे कुछ बीच में फाका लेते हैं ना, कुछ मन कर रहा खाने का, च्यो कर सकते हैं, भिगा करके, ड्राई रोस्ट करके, ग्राइंड करके, यू कैन कीप इट ऑन योर डाइनिंग टेबल। तो दीज आर वेरी इजीली अवेलेबल सोर्सेज वी कैन शेयर विद अदर्स ऑल्सो, एंड विच कैन एनहांस आवर फंक्शंस ऑफ द इम्यून सेल्स। अगर हम वाइटामिन की बात करें तो मेनी मोर वाइटामिन आर ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया गया है। विटामिन ए है, डी है, ई है, और इनके बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिनको कि आप मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत सारे हैं, जो कि अभी समय के अभाव की वजह से मैं आपको एक एक सोर्स तो नहीं बोल सकती, बट आप ही होम साइंस स्टूडेंट्स हैं और आपको बहुत ज्यादा इनकी जानकारी भी होगी। जैसे विटामिन डी की भी हम लोग बात कर रहे थे, विटामिन ए की बात कर रहे हैं, विटामिन ई की बात कर रहे हैं। जनरल देख लीजिए तो जो डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं, तो कहीं पर मिल्क प्रोडक्ट और या तो मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की बहुत जरूरत है, कहीं पर आपको नट्स एंड ऑयल सीड्स की बहुत जरूरत है, और इसी तरह कहीं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की जरूरत है। अगर आप विटामिन सी की बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स आर सो गुड। अगर आप विटामिन B9 की बात करें तो वहां पर आपको राजमा, सोयाबीन, तरह तरह की दालों की बहुत जरूरत होती है। इसी तरह विटामिन B6 की बात करें तो वहां भी दाल आपको हेल्प कर सकते हैं। विटामिन B12 की बात करें तो जितने भी आपके ये है, जैसे कि मीट है, पोल्ट्री है, एग है, मिल्क प्रोडक्ट है, दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। एंड इसी तरह से प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं तो आपको ये भी जो फर्मेंटेड फूड को जो फर्मेंट किया जाता है, जो दही वगैरह होती है, दे आर वेरी गुड फॉर द प्रोबायोटिक्स। एंड आपको जो प्रीबायोटिक्स है, ये प्रीबायोटिक्स भी आप जो ये काइंड ऑफ डाइटरी फाइबर्स है, दीज आर ऑल्सो कैन गेट थ्रू द अनियन है, गार्लिक है, बार्ली है, ओट्स है, एप्पल है। तो सो मेनी डिफरेंट सोर्सेज आर देयर जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, इजिली अवेलेबल हो। आप वहां से इन तरह के न्यूट्रिएंट्स को आप अपने फूड में शामिल कर सकते हैं। जब मिनरल की बात करते हैं, जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन डायरिया मैनेजमेंट, डायरिया इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्फेक्शन। डायरिया में ORS की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी ही जिंक इंपॉर्टेंस है। सो आप इसी तरह नॉट ओनली दिस पेंडेमिक, सो मेनी इन्फेक्शंस को ये सब कंट्रोल करने में हमें हेल्प करते हैं। और अगर हम जिंक सेलेनियम को भी देखें तो ये भी कई तरह की दालों में आपको मिल जाएंगे, होल ग्रेन्स में आपको मिल जाएंगे। और जो हमने अभी आपसे सीड्स की बात की, वाटरमेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, इन सब में आपको ये इजिली सनफ्लावर सीड्स में मिल जाएंगे। इसी तरह आपकी जो मैग्नीशियम है, that also you can get it through the different kind of the legumes and pulses, some green leafy vegetables, almonds. So many different resources are there already available in our kitchen. Already we are buying as a grocery, and we can pick as per our need, as per our choice. And last में हम herbs and condiments की बात करते हैं। शुरू से आपको देखो गले में खराश है, हम गोल मिर्च है, शहद का इस्तेमाल करते हैं, हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं। बस ऐसे ही आपको जिंजर, अभी उषा मैम बता रही थे आयुष मंत्रालय के बारे में। अभी आयुष मंत्रालय का जो गाइडलाइंस थे उसको डेवलपमेंट सेक्टर्स में, जीविका में, ICDS में, सभी जगह कम्युनिटी मेंबर्स के बीच में एकदम इसको वाइडली स्प्रेड किया गया। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि नमक में
घेंघा रोग को हटाने के लिए नमक को आयोडाइज किया गया, क्यों नहीं किसी और चीज को किया गया? नमक क्या है, हर घर में जाता है, हर कुकिंग में इस्तेमाल होता है, so easily available to reach the end users. किसी के भी घर पर हम रीच नहीं पहुंच सकते, इजीली रीच कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है कि आप में से जो लोग हैं सबके पास हर चीज अवेलेबल हो, हमारे पास हर चीज अवेलेबल हो। तो इसलिए हमारे किचन में गोल मिर्च है, हमारे किचन में हल्दी है, हमारे किचन में दालचीनी है, जीरा है, हींग है, पुदीना है और लहसुन है, तुलसी है, नीम है। तो इन सब में से हम चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एक चीज मैं आपके साथ कहना चाहती हूँ कि जब हम इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो अभी हमने देखा कोविड में लास्ट ईयर क्या हो रहा था पेंडेमिक के समय कि लोगों को थोड़ा गैस्ट्रिक इश्यू आने लगा, थोड़ा हाइपर एसिडिटी होने लगी, थोड़ा अनइजी फील करने लगे। तो हम लोगों ने देखा कि रीजन ये है कि जब लोगों को कहा गया काढ़ा पियो तो बहुत अधिक मात्रा में मसालों का इस्तेमाल करने लगे, दिन भर कई बार काढ़ा पीने लगे। तो ये सब जो स्पाइसेस होते हैं it's not so always so good when you take it in extra amount. अभी प्रगति मैम ने भी कहा था ना, अति कोई भी चीज होती है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। चीनी हो या शुगर हो, आपका आपस में किसी का संबंध भी हो, आपस में मेल मिलाप भी हो, नफरत हो, everything is extra is harmful for our body. So these spices are really very good, but they are also harmful if we don't take it in recommended amount. Just without any guidance, if you take it, we can get some kind of sufferings, especially जिनको gastritic issue है, like gastric ulcer है या peptic ulcer होता है, duodenal ulcer, peptic ulcer, stomach ulcer। तो उस समय ये spices जो होते हैं ना, that's not so good। जिनका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है उनके लिए भी ये बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो उस समय इसको हमको थोड़ा सा अंडर कंट्रोल, वही मैं कही कि केवल हम एक जनरल गाइडलाइन तो ठीक है कि दीज आर द इम्यूनिटी बूस्टर्स, बट वहां पर स्पेसिफाई भी करना ही पड़ेगा हम लोग को कि किसी का कुछ क्रोनिक कंडीशन है तो वी नीड टू कंसीडर एंड फोकस दोज क्रोनिक कंडीशन ऑल्सो, एंड देन वी हैव टू टैग दीज न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद दोज कंसिडरिंग दोज कंडीशन जो कि क्रोनिक लेवल पे है। अब यहीं पे जैसे लहसुन की बात करें, लहसुन को कहा जाता है एंड इट्स गुड ऑल्सो फॉर द कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। तो अब इसको बहुत से लोग प्रोसेस फॉर्म में भी लेते हैं, तो प्रोसेस फॉर्म में आप ना ले। प्रोसेस फॉर्म में लेने से क्या होता है, इसके जो बेनिफिशियल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो रिड्यूस कर जाते हैं और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं उनकी कैपेसिटी घट जाती है। इसलिए कच्चा जिसे लहसुन बोला जाता है आप उससे क्यों लीजिए, तो ये ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। लेकिन जिनको गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, मतलब आपका जो ओसोफेगल इश्यू है, आपको खाना हाइपर एसिडिटी होता है, गैस्ट्राइटिस है, वहां पे आपको इन सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। साथ ही साथ जिनको किडनी की प्रॉब्लम है या जिनको आप डायबिटीज है या लीवर इश्यू जैसे मैंने आपसे कहा, तो वहां पर जो भी उनकी थेरेपेटिक डाइट है उसको देखते हुए इम्यूनिटी बूस्टर्स जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी क्वांटिटी को हमेशा एक गाइडलाइन के तहत, क्योंकि हर डिजीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, डिफरेंट अमाउंट में जरूरत होती है, तो वहां पर भी हमें इन चीजों को देखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़े घर के बुजुर्गों के बारे में। तो जो लोग हमारे घर में डायबिटीज वाले जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी खाना पचने में थोड़ा मुश्किल होता है, उनको इजीली डाइजेस्टेबल चीजों की जरूरत होती है। और जो बुजुर्ग जब होते हैं तो उम्र के साथ साथ कुछ ना कुछ लंग्स इशू, हार्ट इशू, किडनी डिजीज, डायबिटीज, ये सभी कॉमन इश्यूज आ जाती है। तो उस समय इनको जब हम इम्यूनिटी बूस्टर्स इतने ढेर सारी इंफॉर्मेशन जब हम शेयर करना चाहें या उनको बताना चाहें, देन वी नीड टू कीप इट कंसिडरिंग कि भाई हम उनको इतना ही बताएं जो वो इजीली डाइजेस्टेबल हो उनके लिए, वो अच्छे से उसको पचा सके और उससे उनको फायदा हो। उसी तरह अगर हम बात करते हैं आपको प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो उनके लिए भी हमको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रेगनेंसी में उनको हम जो डाइट दे रहे हैं उसमें जो 10 से 5 तरह के जो डाइवर्सिटी फूड है वो भी उसमें शामिल हो, केवल इम्यूनिटी न्यूट्रिएंट्स वाले नहीं, और भी प्रोटीन के जैसे हमने बात किया अमाइनो एसिड्स की जो हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं, एनर्जी डेंस फूड की बात कर रहे हैं,
उसको भी हमको उसमें शामिल करना है। और प्रेगनेंसी के समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, कुछ लोग जेस्टेशनल डायबिटीज होते हैं, किसी को हेपेटाइटिस भी होने की चांसेस होती है, इसमें जेस्टेशनल लीवर डिसऑर्डर होने की चांसेस होती है, इसमें किसी को थायराइड इशू भी होता है। तो इन सब चीजों को उसमें किसमें कौन सी डाइट प्रेफर की जाती है उसको देखते हुए उसको आपको बताने की जरूरत होती है। क्योंकि बच्चे कुछ पार्टिसिपेट मतलब करने के लिए वेट कर रहे हैं, मैम काइंडली थोड़ा कंक्लूड कर लीजिए। हेलो मैम। हाँ जी, श्योर मैम, दिस इज द लास्ट स्लाइड, इसको कंक्लूड कर रही हूँ। तो अभी हम लोग बस एक चीज आपके साथ में और शेयर करना चाहती हूँ कि अब हाउस होल्ड लेवल की जब हम बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों को हम अपने डाइट में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास किचन गार्डन जो मैम अभी बताए थे, न्यूट्रिशन गार्डन या इम्यूनिटी गार्डन का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत जो भी हमारे घर में जो जिस तरीके के जो भी छिलके वगैरह निकलते हैं और बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स फॉर्म हो सकते हैं जिसको कि हम घर के लेवल पे उसको यूज करके और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा हम घर की सब्जियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, फलों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। तो आखिरी में मैं आपके साथ यही कहूंगी, सम की मैसेज फ्रॉम दिस सेशन कि एवरी हाउस शुड हैव सम न्यूट्रिशन गार्डन। सैक फार्मिंग बोरे में भी खेती करके हम कर सकते हैं और इससे हम अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, वैरायटी ला सकते हैं। तो अपने प्लेट में डाइवर्सिटी डाइट में लाने के लिए हमारे किचन गार्डन में अगर डाइवर्सिटी होगी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, तो हमारे किचन से हमारे प्लेट में, हमारे किचन गार्डन से हमारे प्लेट में भी डाइवर्सिटी सस्टेनेबल मोड में हमेशा के लिए मेंटेन होगी और ना ही पेंडेमिक बल्कि अन्य डिफरेंट डेफिशिएंसी डिजीज को भी हम कंट्रोल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. The presentation was very interesting, very informative. You are fantastic. Your information are very, very practical. Thank you, ma'am. So many thanks. Lots of thanks. Heartfelt thanks. मैम लेकिन अभी आपको जो है थोड़ी थोड़ी देर और आराम से बने रहना होगा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट करने के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन भी हैं, कुछ ऑफलाइन भी हैं। उसके बाद अल्टीमेटली रिजल्ट आपको देना होगा कौन सा बेस्ट प्रेजेंटेड था। ठीक है मैम? जी आप बनी रहेगी आप बनाओ, उसके बाद आपसे रिजल्ट हम चाहेंगे। ठीक है मैम? तो थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो, may I request Afsar Jamal? Hello, may I request Afsar? You are online? May I request Dev Thakur? Dev Thakur? Yes, Dev Thakur sir. Yes. Are you ready? Concentration. May I request to Shivani? Are you ready? May I request to Vaishnavi? Vaishnavi, number 4. Yes, ma'am. आप start कीजिए. You start presentation. Please. Only for 2 or 3 minutes. Yes, only in 3 minutes. In brief, only. I have no time. I have very less time. So Vaishnavi, please kindly. Vaishnavi, start your presentation. May I request to Nikhat? Nikhat. Hello, ma'am. Yes.
Yes, Rashmi, please. Next presentation slide. Afsa Jamal, are you ready? Lalit sir, Shivani, please. Yes. Hello, ma'am. Please don't take time. I have time. So please. हेलो बंद करो। हेलो Hello, you all are hearing me? आप सब मुझे सुन रहे हो? एक की बात का पहले आप उसके दूसरे रिफ्रेशमेंट पे डिक्शन कर लें, उसके बाद राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति कर लें, उसके बाद है इधर है वोटर में जो भी फास्ट हो रहा है वो है इन ब्रीफ ओनली जस्ट कंक्लूडिंग कोड में that's it. Yes, please. It's preventive slide. Please, preventive slide. कोई दिक्कत चलिए अफसा are you ready? अफसा अफसा unmute your mic. Unmute. See all the Ma'am, am I audible? like take us Ma'am, am I audible? yes. Just like
ma'am. Please prepare your slide. Presentation. Please get down to the floor. Please start the presentation. You are not audible. Your slides are not clear. Next, Vaishnavi, are you hearing? Are you hearing me? Yes, yes, yes. Vaishnavi, Yes, ma'am. Vaishnavi, Yes, ma'am, I'm hearing you. please present your slide. Apsa, you are not audible. On this platform, please start the presentation. Vaishnavi, are you listening? Ma'am, is my presentation visible? You start the presentation now.
इसी सर प्रोग्रेसिव मैम, रजिस्ट्रार सर, एचओडी मैम, प्रगति मैम, शिक्षकगण, अतिथिगण एवं मेरे सुधारगण, मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे वेबिनार में भाग लेने का मौका मिला। मैं अनु कुमारी स्नेहा सब 2020-21 पीएचडी कोर्स की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है किचन गार्डनिंग के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करना। पोषण मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। स्वस्थ एवं सख्त शरीर का निर्माण उचित पोषण पर निर्भर करता है। शरीर को पोषण प्रदान करने का कार्य भोजन के तत्वों के माध्यम से होता है, जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और जल। इन सभी छोटे तत्वों की प्राप्ति से हमारा रोग निरोधक शक्ति बढ़ता है, जिससे हमें जटिल से जटिल बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। इन सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति हम किचन गार्डनिंग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम हमारी पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। गृहपालिका में सब्जी उत्पादन का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसमें सब्जी उत्पादन का मुख्य उद्देश्य होता है कि पूरे परिवार को साल ताजी साग सब्जियां मिले। किचन गार्डन में सब्जियों में नकली रंग, रसायन एवं संक्रामक रोगों के जीवाणुओं की उपस्थिति का भय नहीं रहता, जो बाजार से खरीदी हुई सब्जियों में हो सकता है। हमारा रोग निरोधक क्षमता काफी मजबूत हो जाता है। किचन गार्डन में सितंबर से अक्टूबर में उगाया जाता है, जैसे बैंगन, सरसों, मटर, प्याज, लहसुन इत्यादि। जायद वाली सब्जियां फरवरी से मार्च में उगाया जाता है, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, टिंडा इत्यादि। किचन गार्डन में उगाए जाने वाले पौधे जिनमें मुख्य बुनियादी पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सकती है: कार्बोहाइड्रेट, गन्ना, मसूर, चुकंदर, गाजर, हरा केला, लौकी, सेम इत्यादि। प्रोटीन, मटर, राजमा, गाजर, सेब, मक्का इत्यादि। विटामिन, नारियल, टमाटर, गाजर, हरी सब्जियां, नींबू, पपीता इत्यादि से प्राप्त हो जाती है। वसा, नारियल, तिल, सरसों, तीसी इत्यादि से। खनिज लवण, पालक, बथुआ, पत्ता गोभी, फूल गोभी इत्यादि से। जल है खीरा, तरबूज, टमाटर, सभी रसदार फल एवं सब्जियां। किचन गार्डन में हम कुछ ऐसे पौधे भी लगाते हैं जिससे हमें हमारा घर में ताजी हवा और शुद्ध रखते हैं और घर को ठंडा रखते हैं, जैसे एलोवेरा। हवा के नुकसानदायक हार्मोन इहाई को दूर करता है, फ्लूइड प्लांट में ऑक्सीजन छोड़ता है और बेबी रबर प्लांट कमरे को ठंडा रखता है, हवा के अशुद्धियों को दूर रखता है। किचन गार्डन से बहुत सारे लाभ हैं। हमें ताजी हर्ष मिल जाती है, रासायनिक रहित सब्जियां मिलती हैं, कीड़े मकोड़े का कम होना, मानसिक संतुष्टि भी मिलती है, सकारात्मक परिवर्तन होता है और पारिवारिक आय में भी बचत होती है। उत्पादन से अक्सर क्षेत्र किचन गार्डन के द्वारा उपजाए गए फल, सब्जी, हर्ष और औषधीय पौधे हमारे शरीर की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिससे हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत हो जाता है और हमारे शरीर पर बीमारियों का प्रभाव काफी कम हो जाता है। कहते हैं स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हमारी पहली प्राथमिकता हमारा स्वास्थ्य है, इसीलिए इसके लिए हम सभी को अपने घर के आसपास की खाली जमीन में किचन गार्डन लगाना चाहिए। अब सरकार द्वारा भी आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय और 60% में किचन गार्डन पर जोर दिया जा रहा है और इस दिशा में विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हम सभी को अपने घर के आसपास की जमीन है उसमें अनेक छत के भी गमले में कुछ औषधीय पौधे फल सब्जियों को लगाना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा है और आगे विकास कर सके। धन्यवाद। Hello. Very nice. Okay, welcome on this platform. Thank you.
सभी हैं और मेरे साथी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस राष्ट्रीय सेमिनार में कुछ बोलने का मौका मिला है। मैं उत्सुक हूँ। मेरा टॉपिक है क्षमता आहार और कोविड-19 महामारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 महामारी एक वैश्विक समस्या है और इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज पूरी दुनिया इसकी लड़ाई लड़ रही है। प्रतिरोधी क्षमता का जो है किसी भी तरह से बचाव में बहुत ही भूमिका होती है। कोविड-19 के मामले में काफी आगे बढ़ा है और अब तक लोगों में यही निकला है कि कोविड-19 को करने के लिए सबसे बड़ा होगा अपनी सबको पता ही है कि आहार की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। तो क्षमता बढ़ाने के लिए हमें अपने आहार में विटामिन सी, विटामिन डी, प्रोटीन, दूध, दही इन सब चीजों का समावेश करना चाहिए। साथ ही दिनचर्या, सफाई, मास्क का प्रयोग पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी बातों को ध्यान देती हूँ। Please, Mike, take a सेमिनार में बोलने का मौका मिला है। मैं डॉक्टर सोनी कुमारी सभी मित्रगण और शिक्षागण को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा टॉपिक है रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्वास्थ्य। रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आसपास के हर अक्सर हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि हर समान प्रकार के रोग भी कोई बीमार पड़ जाता है, कोई बीमार नहीं पड़ता है। इसमें उसके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता का अपना ये गुण होता है। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, उसके शरीर में रोगाणु पहुंच भी नहीं सकता, पहुंच कर भी नुकसान नहीं कर पाता। और जिसका कमजोर है उसका हर मौसम में उसको सर्दी, खांसी, बुखार आदि सब बीमार कर देता है। अभी कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी कोरोना के संदर्भ में रोग प्रतिरोधक क्षमता विगत 20 में पूरे साल को कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को तबाह कर दिया है। इस बीमारी में कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्ति को ज्यादा चपेट में लाया है। इसी में जिसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत था वो इस बीमारी से लड़कर भी निकल गया। इसमें हमारे पोषक तत्व भारतीय कृषि व्यवस्था के इस दौर में हरित क्रांति की प्रौद्योगिकियों के कारण कृषि की अधिकता जल संसाधनों का दोहन कर रही है, जैव विविधता पर दुष्प्रभाव डाल रही है, मिट्टी की क्षमता को खराब कर रही है। कोविड-19 के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक और अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे खाद्य पदार्थों की सामान्य को सुगम बनाने और इस दिशा में नए सिरे से कार्य करने की दिशा में नीतियों की समीक्षा का एक ऐसा अवसर दिया है जिसकी जरूरत पूरे विश्व को है। इस व्यापक स्तर पर शोध और आवश्यक कार्रवाई संभव तरीके से होनी चाहिए। सरकारी पोषण अभियान और ईट राइट इंडिया अभियान, मिलेट मिशन और स्वच्छ भारत अभियान की तरह भी पोषण के अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए सरकार गतिविधियां शुरू की जा सकती है। जैसे इस नीति को 3 मुख्य खाद्यान्न में जैसे चावल, गेहूं, मक्का तथा दक्षिणी है। इन फसलों की उपज में बढ़ोतरी के ऐसे कैलोरी संबंधी जरूरतें तो पूरी हुई, लेकिन देश और पोषण और अन्य पोषक तत्वों का बोझ बढ़ गया। चावल और गेहूं की तुलना में ज्वार, बाजरा और दाल जैसी फसलों के लिए न केवल कम पानी की जरूरत होती है
बल्कि इनमें अन्य पोषक तत्व और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है। जैसे रागी में दूध से 3 गुना कैल्शियम रहता है। इन फाइबर तो स्मार्ट फूड के नाम से कहा गया है। गेहूं या मक्का से 10 गुना ज्यादा ऐसे ज्वार बाजरा में मिलता है। कोविड-19 के इस समय में इस क्षेत्र के अनुसंधान और नव प्रयोग में किया गया अधिक निवेश नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के कुछ उपाय जैसे मोटापा दूर करना, शारीरिक व्यायाम करना और खान पान में अच्छा स्वास्थ्य भोजन लेना, ये सब अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। थैंक यू। आप बहुत परेशान की इस प्रेजेंटेशन के लिए। नाउ डायरेक्टर स्टाफ माइक प्लीज कम ऑन स्टेज। प्लीज वेलकम। देखो है देखो एक छोटी विद्या रही आज के सेमिनार का मेरा टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग एट द कॉस्ट ऑफ एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ऐसा कोरोना के दौरान खाद्य पोषण की क्या महत्वता है और उसके कारण स्वास्थ्य क्षमता में पोषण का क्या महत्व है, इसी को देखते हुए इसी तरह में खाद्य सुरक्षा पोषण की स्थिति को दूर करने में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम किया जाता है। पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय रासायनिक खेती के इस्तेमाल को रोकते हुए इस खेती को बढ़ावा दिया जाता है। इस भाषा जैविक खेती एक ऐसी प्रक्रिया है जैविक प्रणालियों का संरक्षण और पोषण करते हुए जैविक खेती के साथ अवशेष को कार्बनिक मच्छर को मारते हैं। उर्वरक के साथ एल्युमिनियम जैविक खेती संयुक्त राष्ट्र जैविक खेती की शुरुआत की गई। इस तरह से सिक्किम सरकार सिक्किम में जैविक खेती के माध्यम से पोषण के सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए पर्यावरण के आवश्यक विकास सुनिश्चित
सबसे
ऐसे खाकर आपने जो आसानी से मिलते हैं और उस समय जिसकी आवश्यकता भी है मैं बनाकर ध्यान रखें नारियल पानी का आप सभी पिए हमारे पास अपना कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम होगी हम अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रख पाएंगे उपयुक्त आहार होगा और से लड़ने में सक्षम होकर अपने परिवार समाज और राष्ट्र को सुरक्षित रख पाएंगे थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच I so please come on stage. Good evening, there and my friends. आज इंटरनेशनल सेमिनार में मैं शामिल होकर बहुत खुश हूँ. मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे बोलने जा रही हूँ. मनुष्य की 3 मौलिक आवश्यकता है: भोजन, वस्त्र और आवास. वस्त्र और आवास के बड़ी भोजन है. जब तक भोजन स्वस्थ नहीं होगा तो आदमी स्वस्थ नहीं है. स्वस्थ आदमी वस्त्र और निर्मित आवास में ही जीवन बिताएगा. अतः अच्छे भोजन प्राप्त करने के लिए अच्छी खेती यानी स्वस्थ खेती का तरीका भी लाना होगा. जैविक खेती की दिशा में निरंतर प्रयास है. जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग किसी की वह विधि है जो रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का बिना उपयोग किए ही खेती करने की विधि है तथा जिसमें विधि भूमि की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए खड़ी खाद और कंपोस्ट आदि का उपयोग किया जाता है. जैविक खेती ऐसी खेती है जिसमें दीर्घकालिक और स्थिर फल प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, फसफरासों तथा विभिन्न यंत्रों का प्रयोग न करते हुए जीवाश्म खाद का प्रयोग कर खेती की जाती है. प्राचीन काल में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल तथा प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी जिससे जैविक अजैविक पदार्थों में भी आदान प्रदान का जन्म निरंतर चलता रहता था. इसके फलस्वरूप जल, भूमि, वायु तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता था. भारत में प्राचीन काल से कृषि के साथ गोमाता भी होता था जिसके प्रमाण हमारे ग्रंथों में सुरुचिष्ट एवं बलराम में जिन्हें हम गोमाता का हृदय के नाम से संबोधित करते हैं. इसलिए गोमाता संयुक्त रूप से अत्यधिक लाभदायक था जो कि प्राचीन वातावरण के लिए अत्यंत उपयोगी था. संपूर्ण जितने बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति भी आवश्यक होने लगी. खाद्य उत्पादन की ओर अधिक से अधिक तरह के रासायनिक उर्वरकों, जहरीले कीटनाशकों का उपयोग रासायनिक पृथ्वी का इकोसिस्टम को प्रभावित करने लगा तथा इससे भूमि की उर्वरा शक्ति खराब होने लगी. साथ ही वातावरण प्रदूषित होने लगा तथा मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट होने लगी. भारत वर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कृषकों की मुख्य आय का साधन खेती व्यापारिक क्रांति के समय से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए एवं आय की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाना आवश्यक हो गया. अधिक उत्पादन के लिए खेतों में अधिक मात्रा में रासायनिक खाद, उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है जिससे सामान्य और छोटे किसान के पास कम जमीन में अत्यधिक लागत लग रही है. साथ ही जल, भूमि, वायु और वातावरण भी सतत प्रदूषित हो रहा है. सबसे आम है कि आधुनिक योगी इस सृष्टि का सबसे आधुनिक प्राणी है जिसके लिए की पृथ्वी पर सारी घटनाएं घटती है. अनुभव इस दूषित वातावरण का पहला विकार होता है और पता चलता है कि जिंदगी की तलाश में जिंदगी को ही छूट जाते हैं. थैंक यू. थैंक यू. जिंदगी की तलाश में जिंदगी को ही छूट जाते हैं. क्या? थैंक यू. थैंक यू. अफसर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किस this guy Welding are you the same Welding you are Ma'am, I can't share my slides. No, ma'am. मैं बोल लूँ फिर First of all, a very warm
good afternoon to all the listeners present over here. Myself, Vaishnavi Bhushan, research scholar from LNMU Darbhanga. My topic is ensuring health and nutrition safety through safe food practices in Indian families. The introduction is food safety is scientific discipline describing handling, preparation and storage of food in ways that prevent foodborne illness. According to WHO, around the world, an estimated 600 million, almost 1 of 10 people, fall ill after eating contaminated food each year, resulting 4,20,000 deaths and loss of 33 million healthy life per year. The main reason of foodborne illness is food hazards. Food safety means assurance that food will not cause any harm to the consumers, and understanding of food safety is improved by defining hazards. There are 3 types of hazards: biological hazard, chemical hazard and physical hazard. The main reason in all 3 is biological hazard, which are causes by bacteria, viruses, parasites and molds. In chemical hazard, there are pesticides, processing chemicals, drug residues, and allergens. In physical hazard, the food is contaminated with bones, pits, bugs, glasses, metals, etc. Through the world, women are the principal guarantors of food safety and quality of food, at the household level. They are the ones who most often produce, purchase, handle, and prepare and serve food for the family. Most families we found that there was a lack of correct adherence to food hygiene, mainly due to the error during both preparation and handling. Although our food supply generally is safe, home food practices are the weakest link in the food chain from farm to kitchen table. Be sure to follow 4 basic practices. The 5 basic practices to ensure food safety are as follows. First one, to keep everything clean. Second, separate raw food and cooked foods. Third one is cook thoroughly. Cook your food at an optimum temperature. Keep food at safe temperature and use safe water and raw materials. First one is cleaning. Always wash your hands, wash your foods, counters and cooking tools. Wash your hands with soapy warm water for at least 20 seconds. This just you have to do before and after when you touch your food. Wash your cutting boards, dishes, forks, spoons, knives and countertops with hot soapy water. Do this after and before working. Rinse food and veggies thoroughly. Clean the lids of canned goods before opening. Second one is separate. Keep raw food to themselves. Germs can spread from one to another food. So keep raw meat, poultry, seafood and eggs away from other foods. Do this in your shopping cart, bags and fridge. Do not reuse marinades used on raw food unless you just bring them to the boil. Use a special cutting board or a plate for raw foods. Third one is cooking, which is the most important part of food safety at household level. Food need to get hot and stay hot. Heat kills germs. Cook to safe temperatures and cook beef, pork and lamb at 145 degrees of Fahrenheit, fishes at 145 degrees of Fahrenheit and chicken and duck at 165 degrees of Fahrenheit. Use a food thermometer to make sure that food is done. You can't always tell by looking after. Serve hot food hot and cold food cold. Do not mix them together. Fourth one is chill. Put down in the fridge right away when you cook. Always follow the 2-hour rules. Put foods in the fridge or freezer within 2 hours after cooking or buying from the store. Do this within 1 hour 90 degrees or counter.
Never have food by simply taking it out of the fridge. Keep food in the fridge or under the cold water. Just marinate fruits and foods in the fridge. Refrigerate leftovers immediately and use it after heating it on an optimum temperature. Next is food safety and nutrition. There are 10 golden rules for safe food nutrition in Indian families. Cook raw foods thoroughly. Stage. Please go on the platform. Present your paper. Observe the mark. From Bana. Present the top. Observe the mark. Which one is the best? Okay. So, thanks to all of you who have presented the paper, and it was really nice to listen all of you, and you were sharing the different your own views on different dimensions, and these efforts combinedly can surely affect a person to fight against this pandemic. And many different topics were shared over here. And from my side, I go for ensuring health and nutritional safety through safe food practices. This is presented by Vaishnavi Bhushan. Congratulations and all the best to all of you. Thank you. Thank you. Yes, sir. Thanks, ma'am. Thanks for the president. Thank you.
Professor and Assistant Professor at my University Department. Please go ahead. Please go ahead. Good evening to everyone. I feel greatly privileged and honored to propose the vote of thanks. First and foremost, I wish to thank our head of the department, Dr. Ma'am, for organizing such a fruitful seminar. The purpose of the seminar has been fulfilled by the enlightening words of eminent speakers, Professor Neeru Sinha Ma'am, Professor Rekha Singh Ma'am, Dr. Neeru Prashant Ma'am, Professor Usha Singh Ma'am, Mrs. Vicki Kohli and Mrs. Anila Hindu Center Ma'am, who was with us till the last moment. Thank you very much, ma'am. The seminar would not have been achieved its desired outcome without the enthusiastic participation of the students who presented their papers and the students who were present throughout the seminar. Finally, I would like to end by saying a big thank you to our organizing committee, Dr. Pranati Ma'am, who has taken all the effort and pain to make it a successful one. And lastly, the technical staff, Mr. RAGHUBAR, who was getting a little bit irritated by our activities, but still, thank you very much for organizing such a nice seminar. Without your help, without the technical staff, this wouldn't have been possible because this is both offline and online mode. Thank you very much. Thank you. Thank you, Chandana. Thank you all. Thank you all participants. कहते हैं ना इस पे हमारा ट्रायल से खत्म पर आपका जो मेरे पार्टिसिपेंट्स थे, thank you all.